ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। हम्म 20 प्रीमोस। अच्छा, होयो लैब के मिले हैं तो। होयो लैब, होयो लैब। Think you can bully me? What? Punishment! You can't run! नज़र ही नहीं आ रहा। Verdict is बाय। Judgment! Hit! Hit! दाई नीची मिकोशी। अच्छा, मैं कानूमिया में हूँ। व्हाट्सअप अल्ट्रा। अरे यार, कल मैं कर नहीं पाया। मैंने बोला था कल मैं स्ट्रीम करूँगा, पर मैं एक्चुअली सुबह मुझे जल्दी से कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया, तो मैं चला गया। फिर रात को मैं लेट घर आया। पर आज यार करनी है। 3 दिन मैंने स्ट्रीम नहीं की। 2 दिन क्या कहते हैं, मेरा शूट था तो वहाँ पे बिज़ी थे। अब यहाँ कल मैंने शाम को नाटक देखा एनएसडी में, ताजमहल का टेंडर। अच्छा था। किसी ने देखा यहाँ पे थिएटर के अंदर नाटक कभी? ओह, आज कोशिश की जाएगी अबिस क्लियर करने की, जो भी मेरे पास छोटी मोटी टीम है उससे। अच्छा, ये भी आया है कुछ नया। एडवेंचरर्स ट्रायल्स, ब्रांच मास्टर साइरस ऑफ माउंट स्टैट एडवेंचर्स गिल्ड हैज प्रिपेयर्ड प्लेंटी ऑफ ट्रेनिंग चैलेंजेस। ओके, क्या रिवॉर्ड्स हैं? अरे वाह, ये तो बहुत काम आएंगे। द स्लाइम, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कौन बनेगा राइडन पति में आपका स्वागत है। अरे स्टोरी क्वेस्ट भी करनी है मैंने अब तक। मैं इसके कहाँ से स्टार्ट करूँ? शायद काजुआ की स्टोरी क्वेस्ट से स्टार्ट करता हूँ। ये पहले आई थी, उसके बाद येलान, फिर टाइनारी, साइनो, नीलू, नाहिदा, फिर ऐसे करेंगे। पर उसके लिए चाहिए अपने को कीज़ के लिए पूरी करनी होंगी कमीशंस। तो चलो पहले कमीशंस पूरी करते हैं। हाँ, नाहिदा के वेपन का डोमेन कब अवेलेबल होगा? नाहिदा के वेपन का डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल है यार, वरना क्या ही पॉइंट होगा कि नाहिदा लॉन्च कर दे उसका डोमेन। एक मिनट, वेपन का कौन सा डोमेन होता है? एक मिनट, वेपन का कौन सा डोमेन होता है ब्रो? वीकली बॉसेस पे रेजिन यूज़ कर लो। हाँ यार, रेजिन का भी यही पंगा है ना कि इतना छोटा सा रेजिन है मेरे पास, क्या कहते हैं, भंडार। अच्छा, वेपन एसेंट का तो आ गया होगा। नहीं तो देखो, अगर वेपन लॉन्च हुआ है तो उसके असेंशन के जो मटेरियल है उसका डोमेन भी आया होगा, वरना लोग बगावत नहीं कर देंगे कि एक तो पैसा खर्च के नाहिदा मिली, ऊपर से उसको उसके वेपन को मैं सेंड भी नहीं कर सकते। पहले जरा इनको लें। रह गया कोई?
डोमेन नॉट अवेलेबल दिखाता है। डोमेन नॉट, तो उस डोमेन की मेरे ख्याल से क्वेस्ट होगी कोई जो करनी होगी, क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया वो। वही हुआ होगा। क्या करना है? अच्छा, Shake it and stir. Time for retribution. तो कौन रह गया? पहले से देखूं जरा। Yeah. Shiver. ये कहाँ चढ़ा हुआ? वहाँ चढ़ के कर क्या रहा है? कौन आ गया? ओह, Think you can bully me? Can't handle your drink. Huh. Verdict Bye. is रह गया। डोमेन नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, तो आज मंडे है, कल या परसों अनलॉक होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि डोमेन्स के भी तो अपने दिन होते हैं ना, उसके हिसाब से अनलॉक होगा। हाँ, कोई मुझे रेजिन यूज़ करने के लिए करता है ना डोमेन्स में। मुझे कह रहे थे या स्लाइम को कह रहे थे डोमेन में रेजिन यूज़ करने के लिए? क्योंकि मुझे अपना रेजिन यूज़ करना है, बट मुझे उसके लिए करना है, सुक्रोस को अपग्रेड करने के लिए। यहाँ से चलते हैं। सुक्रोस अपग्रेड करनी है राइडन की टीम के लिए। काश मेरे पास वेंटी होता। टैं, टैं, ट्रू। Judgment. time for retribution. Ha ha. जो बलून में से आवाज़ निकलती है ना मारने पे, ये बड़ी सही लगती है। और बताओ यार, शांत क्यों बैठे हो? क्या चल रहा है? 3 दिन में क्या किया? खानोमिया सुक्रोस भी ठीक है क्राउड कंट्रोल के लिए यार। जब किसी का वेंटी ना हो तो वो क्या करेगा? वो सुक्रोस यूज़ करेगा ना, स्पेशली जिसकी सुक्रोस C6 हो। ठीक है, इकलौती C6 कैरेक्टर मेरी सुक्रोज ही है, तो क्या कर सकता हूँ? ओके, कहाँ जाना है? वहाँ। सुक्रोस का टैलेंट मटेरियल कौन से बॉस से मिलता है? सुक्रोस का जो टैलेंट मटेरियल है, आ गई सुक्रोस टैलेंट, ये अपग्रेड करना था ना मुझे। पोरियस। और आज क्या है? मंडे। अरे आज मिलेगा, यहाँ करेंगे। मुझे फिलॉसफीज ऑफ फ्रीडम चाहिए सुक्रोस के लिए, तो आज इसको लेवल 10 करेंगे। ये लेवल 11 है ही, है ना। फिर उसके बाद मैं इसके वेपन, मैंने इसको विड से दिया हुआ है। टेक्निकल हेल्प सम लक्ष्य फ्रॉम डिस्कॉर्ड। हाँ हाँ यार, बताया था पहले भी, वी नो। मेरे जो पहले 100 सब्सक्राइबर्स हैं ना, इनके नाम तो शायद ही मैं कहीं भूलूंगा। पहले पहले हो ना, कल को चाहे हज़ारों हो जाए, लाखों हो जाए, लेकिन पहले 100 हमेशा याद रहते हैं। स्पेशली वो जो एक्टिव हैं, जैसे अल्ट्रा हो गया, स्लाइम हो गया, ऐश्वरी है। तो फिलहाल तो उसको विटसेट दी हुई है मैंने। हमें क्या करता है? आर्टिफैक्ट फार्म, उसके बाद एक बार टैलेंट फार्म हो जाए, उसके बाद आर्टिफैक्ट फार्म होगा। हाँ, तो कहाँ जाना था? वहाँ। Shake it and stir. Look at you, booze hound. Lights out.
सही डैमेज है रेजर का यार। मालूम था, मैं रेजर को बदनाम करते हैं कि रेजर का डैमेज ऐसा है वैसा है वैसा। Scratch that. Yeah. हाँ वेरी डिसेंट वाले आर्टिफैक्ट यार, वही फार्म करने हैं। अरे मुझे स्ट्रॉन्ग बॉक्स का चक्कर बताओ, स्ट्रॉन्ग बॉक्स से भी आर्टिकल्स अपन ले सकते हैं ना? उससे भी होता है, वो भी मैं आज एक्सप्लोर करूँगा। फिजिकल डैमेज, हाँ फिजिकल डैमेज बस ये रहता है यार लेट गेम में ना, फिजिकल डैमेज की कोई पूछ नहीं है। रेजर हो गई, यूला हो गई, तो फिजिकल डैमेज को कोई नहीं पूछता। खाबी कीता नहीं, इसका मतलब क्या? आर्टिफैक्ट्स मेरे पास बेकार ही पड़े हैं भाई, खासकर विरिडिसेंट के तो है ही नहीं मेरे पास ढंग के, तभी तो सुक्रोस को बेकार पकड़ाए हुए हैं। Shake your hands. Verdict is Have a little pick the wrong test subject. Free. कुछ भी कहो, रेजर की अल्ट लगती तो सेक्सी है, लगता है कि हाँ कुछ पावर है। Wrong test subject. दूसरी सप्लाई कहाँ है? सॉरी ड्यूड किंग, हेलो ड्यूड, हेलो माय ड्यूड, वेलकम वेलकम वेलकम। आज 3 दिन के बाद स्ट्रीमिंग हो रही है, बहुत लंबी छुट्टी ले ली मैंने। अच्छा कभी किया नहीं है उसका यूज़, ओके। मुझे लगा यार अचानक से कौन सी लैंग्वेज बोलने लगे, खाबी किया नहीं। पूरा 1 मोर लेवल। और अब बारी है कमीशंस की, एक्चुअल कमीशंस की। आइए कोई होता है ना जो हिंदी में वो अंग्रेज बोलते हैं, हिंदी खाबी खिया नाई। तुम साला हिंदुस्तानी डॉग, दुगुना लगान देना पड़ेगा। हाउस माय रेपुटेशन इन अजूमा। बाउंटी आ गई, यस इसकी बाउंटी लेंगे। क्या लगता है एबिस क्लियर कर सकता हूँ मेरे पास जो कैरेक्टर हैं? लगता नहीं यार, 4 तो कैरेक्टर मैंने मेन बिल्ड किए हुए हैं, अब इसके लिए कम से कम 2 टीम चाहिए। 12 फ्लोर तो क्लियर नहीं होंगी पर कुछ तो हो ही जाएगी। लगान मूवी में आ डायलॉग ये वाला, तुम साला हिंदुस्तानी कुत्ता, दुगुना लगान देना पड़ेगा। आजा भाई हीरो, I'm here. पानी में आ, पानी में। आर यू वेट? Scratch that. Thank you. Can't handle your drink. Judgment. Shiver. time for retribution. Ha! 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 Get back. You can't run. Shaken and stirred. Burn! मैं हाईएस्ट 11-2 किया है अबिस में। मेरा हाईएस्ट पता क्या है अबिस के अंदर क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया अबिस ज़्यादा कभी। मेरा अबिस में भी हाई दिखाता हूँ जाके। ड्यूड किंग पुलिंग फॉर नाहिदा? नहीं यार, नाहिदा की अभी कोई जगह नहीं मेरे जीवन में। हमको चाहिए मम्मी जी। मम्मी जी पता है ना कौन है, जो अगले बैनर में आने वाली मम्मी जी। तो अपने को तो मम्मी जी चाहिए, नाहिदा की कोई जगह नहीं है।
बाउंटी कंप्लीट नहीं होता? बाउंटी कैसे कंप्लीट नहीं होता यार? बाउंटी तो बड़ी आसान है। बाउंटी डेली रीसेट होना चाहिए भाई। डेली रीसेट होगा तो ये सारे लोग इसको एक ही दिन में पूरा कर देंगे। रिवॉर्ड्स को जो ये है ना रेपुटेशन लेवल के जो रिवॉर्ड्स हैं। मम्मी जी प्रणाम। मम्मी जी के पैर छुओ भाई, अगले बैनर में आने वाली हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करके प्रीमो सेव कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी पेटी कितनी है, देखना पड़ेगा वो भी। अरे कहाँ जाना है? यहाँ वो रहा नीचे। राइडन नाम बड़ा ज़बरदस्त है, कुछ भी कहो। एक ना नाम में इतना वेट है। Judgment! Punishment! Your verdict is? Scratch that! Look at you! बाय। Whose AR level is highest? स्लाइम का AR 60, मेरा AR 55 एज ऑफ नाउ अब तक। AR 55 बढ़ रहा है धीरे धीरे। मेरा AR 60 हो जाता अगर मैंने बीच में जो 5-6 महीने छोड़ दिया ना, खेली नहीं गेम मैंने, ये मेरा हो चुका होता तो AR 60। अब कौन है? रोलिंग क्वीज, ये तो आसान है यार। कैन यू गिव सम टिप्स फॉर हाईएस्ट डैमेज विद हु ताओ? हु ताओ पे हाईएस्ट डैमेज? यहाँ हु ताओ मेन कौन है? हेलो लवनीत ब्रो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। अभी 12 नहीं बजे। बताओ हु ताओ मेन कौन है यहाँ पे? क्योंकि मैं तो यार हु ताओ मेन नहीं हूँ। ऑल्दो मेरे पास हुताओ है। क्रिम्जन विचेस ऑफ फ्लेम, हुताओ को पकड़ाओ, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं तुम्हारे पास वो है, क्या नाम है उसका, स्टाफ का, स्टाफ ऑफ होमा, तो बल्ले बल्ले। पहले इन्हें हटाओ, ये साले बहुत परेशान करेंगे। बाय। भाग 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 भाग। एक तो ससुरा भागता नहीं है। Can't handle your drink, huh? वो मर गया इतनी जल्दी? चलो कोई नहीं, Lights out. Sa- मैंने बोला ये आसान है और इन्हें दिल पे ले लिया। हो गया तेरा? You इधर can't आ run. ससुरे, मुझे फिजिकल डैमेज दिखाता हूँ। Yeah. Kick. Yeah. Sa- Scratch that. Stay on us. Scratch. Punishment. Judgment. Shaken and stiff. Kick. Yeah. Time for retribution! Look at you, Boozound. Where'd that come from? यार इसे कौन हील कर रहा है? अरे मैं कहूँ ये हील कैसे हो रहा है? Lights out. Verdict is? वही मैं कहूँ इसे हील कौन कर रहा है ससुरे को? ब्लैकक्लिफ ही है F2P में। सही है, ब्लैकक्लिफ पोल भी 1 लाख से ऊपर डैमेज दे देगी। ड्यूड किंग कैन आई जॉइन योर वर्ल्ड? हाँ यार तुम ज्वाइन कर सकते हो। करोगे क्या अभी यहाँ पे? मैं तो भी कमीशन पूरी करके वो करने वाला हूँ, क्या कहते हैं, डोमेन सुक्रोज के लिए, तो उसमें हेल्प करनी तो आ जाओ।
जिस जिसको हेल्प करनी है अभी ज्वाइन कर सकते हो। सुक्रोज का डोमेन करूँगा मैं भी। ऑल दो रेजिन मेरे पास 3 के बराबर ही है खाली। ओनली 3 के किसका? मेरा डैमेज? मजाक मत उड़ाओ ऐसे। मेरी योई में डैमेज नहीं दे रही, पर हुताओ का C1 ज़रूरी होता है। वही तो। अरे इलेक्ट्रोक्यूलस का मिल गया, बस अब एक और मिल जाए। ये तो इसका यहाँ पे मेरा जो ट्री है उसको मैं कर दूंगा। अरे एक्सेप्ट किया तो अभी कहाँ गए? हुताओ का C1 ज़रूरी होता है, यस, इसलिए मैंने उसे बिल्ड नहीं किया। रिक्वेस्ट रिसीव्ड। हाँ, कहाँ जाना है मुझे पूरी करने के लिए? ये दूसरा अकाउंट नहीं, वो दूसरा अकाउंट नहीं यार, वो तो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। दूसरा अकाउंट गो टू क्वेस्ट, वो अकाउंट मैंने अब तक मतलब इसमें दिखाया नहीं है। वो तो तभी दिखाऊंगा जब मैं उसमें, जब विशेष सारी सेव हो चुकी होंगी। अरे यार कहीं ऐसा है क्या कि मैं उसमें वो नहीं कर पा रहा? ओहो, एक मिनट। ड्यूड किंग, I'm sure the Kamisato clan will be fine. आपने राइडन लेवल अप क्यों नहीं की? यार ये सब मुझसे यही पूछते हैं। उसी के लिए मैं सुक्रोज का डोमेन करना चाह रहा हूँ। चलो सुक्रोज का डोमेन करते हैं, उसके बाद सुक्रोज डोमेन। मारो सुक्रो डिक्रो, उसके डोमेन में चलते हैं पहले। कहाँ है सुक्रोज का डोमेन? एक मिनट। टैलेंट अप अप अप, फ्रॉस्टेड ऑल्टर, ये रहा। लेकिन उससे पहले मैं जरा अपना रेजिन कंडेंस करके आता हूँ। मास्टरी वायर से कौन सा कैरेक्टर लेने वाले हो? मिस्ट्री, कौन है मिस्ट्री यहाँ पे? अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मैंने तो बताया ना, राइडन के लिए मैं बिल्ड कर रहा हूँ। राइडन के लिए फार्म मैं सबसे बाद में करूँगा, पहले टीम क्रिएट हो जाए, स्पेशली सुक्रोज क्रिएट हो जाए। बेसिकली तो उसकी ज़रूरत है मुझे। मैक्स लिमिट 5 रीच। अरे 3। अच्छा पहले इन्हें करना पड़ेगा क्या? 5 स्टार आर्टिफैक्ट चाहिए, पर उसके लिए तो तुम्हें होना पड़ेगा AR-45। वहाँ तक पहुँचो, उसके बाद आएगा। फोर सेकंड रिफ्ट है ना? If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. नाहिदा का कोई टीम, हाइपर प्लूम टीम बनाओ नीलू के साथ। अल्ट्रा एक आ जाओ, मैं अपने डायोना लेके। हुताओ ठीक है भाई। अल्ट्रा फ्रोज़न
फोरसेकन फ्रोजन रिफ्ट है यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं है। क्या कहते हैं गान्यू का, नीलू या मोना, हाँ। Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. हो गया, चलो ये भी करेगा। हाँ डन। मोना भी है लेवल 20 पे। योइमिया, बेनेट, डायोना, जोंगली, काजुहा। डायोना, जोंगली या काजुहा? डायोना ले लो यार, डायोना कम से कम। डायोना मैंने बिल्ड ही इसलिए की थी कि डायोना कम से कम बाकी को भी तो वो करती है ना शील्ड। जोंगली बस अपने आप को शील्ड करता है, विच इज़ गुड अगर आपको अपना सिर्फ अपना अपना ही देखना है। पर दूसरों का सोचो ना भाई, अगर किसी कोऑप में किसी के साथ खेल रहे हो तो डायोना सबको शील्ड देती है, शील्ड एंड हील। हाँ, जोंगली हील भी नहीं करता। Scratch that. Can't handle your drink. Huh. Time for retribution! Ha! Ha! Burn! Ha! और जोंगली की शील्ड ही ब्रोकन नहीं, डायना शील्ड उसके आसपास भी नहीं है। या डायना की शील्ड ऐसा नहीं है, तुम डायना की शील्ड को कम मत समझो। Nice and spicy. Fuse is lit. Time for retribution! मैं डायना यूज़ कर रहा हूँ और मुझे डायना की शील्ड कभी भी ऐसी नहीं लगी कि काश कुछ और अच्छा होता मेरे पास। Out of the frying pan. समझ रहे हो? Into the fire. यहाँ देखो ना, अभी मैं डायना की शील्ड तो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। Huh, I'm here. Nice and spicy. Eat this. मेरी डायनो C3 है, तुम डायनो C2 कह रहे हो ना। मेरे पास C3 डायनो है और C6 हो जाए तो और भी मज़ा है। तो थोड़ा डायनो पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। बाकी जोंगली देखो सब बिल्ड करते हैं, क्योंकि डायोना जो एक चीज़ नहीं देती जो जोंगली देता है वो है डैमेज, ठीक है। अरे बाहर क्यों आ गया, शिट। अल्ट्रा तो आ गया, वो कहाँ है दूसरा वाला? एक मिनट दोबारा करता हूँ। कोऑप कंफर्म। वही सिलेक्ट कर लो पहले वाले। हाँ, हुताओ से खेलो। हुताओ। क्रायो हाइपोस्टेसिस के अटैक को ब्लॉक कर देती है डायनो। डायनो की शील्ड स्ट्रांग है, डायनो का तुम कमज़ोर मत मानो। डायनो का अच्छे HP आर्टिफैक्ट्स पकड़ाओ, उसकी शील्ड बहुत सही है, सेकंड इन बेस्ट है जोंगली के बाद। मुझे डायनो यूज़ करते हुए इतना टाइम हो गया। Verdict is... Ha! Help! Can't handle your drink. Fire! Think you can bully me? Out of the frying pan, into the fire! Retribution! Time
Time to go. Ha! Ha! Shaken and stirred. Stay up. Verdict is 69,000. Get them. ha! Claim और character frozen reflect. Ta! Burn! Nice and keep it bully me. Look at you. Blue down. Cross over. ये रह गया. Time for retribution! Ha! वाह क्या dodge मारा है भाई ने. क्या dodge मारा है. Ha! क्या ही dodge मारा है. C0 है. हाँ रह सकते हो. देखो मैं डायना तब भी यूज़ करता था जब वो C0 थी. उसके मुझे वो तो मिल गई बाद में. समझ रहे हो. उसकी कॉन्स्टलेशंस मुझे बाद में मिल गई. जोंगली की कितने वो हैं तुम्हारे पास. कितने कॉन्स्टलेशन ओपन है. और अगर C6 डायोना है तो फिर तो जोंगली यूज़ ही मत करना. C6 डायोना बहुत काम की है. बहुत काम की. डायोना का C6 कैरेक्टर विद सिग्नेचर मिक्स जो इसके ऑल्ट के बीच में खड़ा होगा उसकी इनकमिंग बोनस 30% हील होगी. एलिमेंटल मास्टरी 200% हील हो जाएगी अगर उसका HP 50 से ऊपर है. तो समझ रहे हो. Shaken and stirred. Stay up. Verdict is ha! Your pants on fire. Gotcha. Ha! Ha! Phew. Time for retribution! Yeah. Ha! Ta! Your verdict फिर गायब हो is गया. फिर गायब हो गया. अब बच गया. आ गया सामने. ha! कल तो वो लड़की यूज़ करता हूँ शायद. नोएल नाम है उसका. हाँ नोएल. Think you can bully me? Look at you. Yeah. Time for retribution! ये रह गया. Ha! टुंग डा टा टिंग टा. Ha! Ha! Your verdict is ha! Yeah. Frying pan into the fire. Ha! उसका शील्ड भी अच्छा है. नोएल का. हाँ नोएल का शील्ड भी अच्छा है. पर जियो कैरेक्टर से प्रॉब्लम है ना. जियो कैरेक्टर्स को तुम किसकी टीम में बैठाओगे. जियो कैरेक्टर्स को उनकी खुद की टीम बनाओ. जियो इस गेम का आर्ग्यूबली सबसे वीक एलिमेंट है. ठीक है. एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट. संप्रीत दास गुड आफ्टरनून ब्रो. सॉरी यार मैंने मैसेज मिस कर दिया. कौस्तुभ हाय भाई. हेलो हेलो हेलो. थोड़ा ध्यान ज़रा यहाँ लगा हुआ था. और कैसे हो. उतने कैरेक्टर्स नहीं हैं तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि जितने हैं उनके हिसाब से अच्छी से टीम बना लो कोई. बहुत स्पीड में अपना यार बढ़ाया है. ये तो प्रॉब्लम होती है. Scratch that. Can't handle your Burn! Ha! Ha!
Higher, higher, pants on fire. Verdict Think you can bully me? Look at you. Cross over. burn! Ha! 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 बैनेट निकाल लो. हाँ सोच रहा हूँ बैनेट ले आऊँ अगले उसमें. शील्ड का करना क्या है? अगले में बैनेट लेकर आते हैं. Time to go. Quit it. Scratch that. Can't handle your drink. तो कैरेक्टर क्यों चेंज नहीं हो रहा Race Boba. यार? कमाल है. हाँ अब हुआ. बाय. Retribution! गायब. कॉस्ट्यूम आ जाओ यार. 2 और रह गए हैं डोमेन. उसके बाद जाना पड़ेगा क्योंकि मैं क्वेस्ट में लगूंगा. आ जाओ. 3 डोमेन और रह गए मेरे. वो और करने मुझे. मतलब 3 रन और हैं. तीन नहीं 2 और रह गए. एक कंडेंस रेजिन अभी बचा है और एक कंडेंस रेजिन मैं बनाऊंगा तो आऊँगा. तो अल्ट्रा जो करेक्टर यूज़ कर रहा है ना वही मैं यूज़ करता हूँ. अच्छा एक मिनट. रेजिन कंडेंस करके आया है मैं. ज़रा 1 मिनट. नया वो आया है ना आज एक इवेंट. तो उसमें ज़रा प्रीमोजेम्स इकट्ठे करके आऊँ. बन जा सिम. कूल. आ जाओ भाई कौस्तुभ. एंटर करो. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? यार काजुआ भी चलेगा. काजुआ है भाई के पास. वो जिसका छोटे वाला बेयर है. शानलिंग. शानलिंग तो बहुत अच्छी है यार. शानलिंग को तुम सब DPS बना सकते हो. DPS बना सकते हो है ना. शानलिंग सपोर्ट बहुत अच्छा है. खासकर इसके अंदर जो ये जिस डोमेन से मैं भी आया हूँ बाहर. शानलिंग तो बहुत सही है. मेरे पास C1 है शायद. कहाँ गई मेरे पास? ये देखो मेरी हुताओ जो है C0 है. यानफे C0 कॉलेज C0. शानलिंग कहाँ है? शानलिंग राइडन C0. इसको बनाना है. ये रही शानलिंग. C1 है मेरी. बारबरा C1. शिंगचो C3. लीसा C1. अबिस के लिए हाँ शानलिंग तो अबिस में बहुत लेके जाते हैं लोग. बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं अबिस के अंदर शानलिंग. कहाँ है बेनेट? There are Benny, leaves around, Benny boy. and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. अरे बेनी मैं यूज़ कर रहा हूँ यार. अल्ट्रा शानलिंग C6 है. हाँ फिर तो उसको यूज़ करो. अरे ड्यूड फिर तो शानलिंग को यूज़ करना है यार. चलो ये टीम भी सही है. Osmanthus स्टार्ट. wine tastes. सारे पायरो वाले. सारे भाई पायरो वाले.
बेनेट अकेला पायरो कैरेक्टर है जिसकी थीम में ज़्यादा रेड कलर यूज़ नहीं हुआ, देख रहे हो? सिर्फ इसके हाथ में रेड कलर का बंधा हुआ है और निक्कर पे थोड़े से रेड कलर की स्टिचिंग है, उसके अलावा ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। I'm going in. Eat this. I see. Don't burn yourself out. Retreat. अरे इतनी जल्दी कहाँ मर गए भाई? Off we go. Teamwork is dreamwork. हील हील हील। Nice and spicy. Verdict is Let's light it up. अरे कहाँ है बाकी सब? Everybody stand back. Let's light it up. Get them. retribution. Let's light it up. कहाँ है सब? आओ हीलो। Going in. Spicy. Adventure time. Let's light it up. चलो ये तो मरी गई ऑलमोस्ट। Everybody stand back. Let's Careful. Burn. गई। गया, बच गया बच गया बच गया। वैसे जितने पायरो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे उसके हिसाब से और जल्दी फिनिश होना चाहिए था ये। मेरा चाइल्ड सबसे कम लेवल है 40, कभी बिल्ड ही नहीं किया। चाइल्ड ही मेरे को भी इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने चाइल्ड एक बार ट्राई किया था, मुझे कुछ खास नहीं लगा। मतलब ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ना वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे ना किसी का प्ले स्टाइल बहुत अच्छा लगना ज़रूरी है। बेनेट कितना जल्दी चार्ज हो रहा है इसलिए क्योंकि बेनेट की जो ऑल्ट है उसके बीच में खड़े होते हैं जब, तो बेनेट की जो ई है वो जल्दी चार्ज होती है बार बार। दैट्स वाई बेनेट के अल्ट में खड़े होंगे क्यू के अंदर तो उसकी ई जल्दी चार्ज होगी। कोई रह गया? कोई छोड़ के गया क्या? अरे कोई तो छोड़ के गया। अच्छा हाँ ये छोड़ के गया ना ड्यूट किंग। वेट, मोबाइल प्लेयर EQ, हाँ EQ सॉरी। बेनेट की क्यू के अंदर बेनेट की ई जल्दी चार्ज होती है। आ गए ड्यूट किंग, वापस आ गया। Gather. कोई बात नहीं आ जाओ। Osmanthus wine Razor. tastes the same as I remember. हुताऊ किसके पास थी यार? हुताऊ Where are यूज करो। those who share the memory? चलो ये भी सही है। एक इलेक्ट्रिक होगा तो जल्दी जल्दी वो होगा ओवरलोड। adventure time. Off we go. मोबाइल प्लेयर का पेन ड्यूड के पास हुताऊ। देखो हुताऊ के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? देखो हुताऊ क्या यूज़ करती है? चार्ज अटैक, ठीक है। और फोर्सेकन रिफ्ट जो है, जो ये वाला जो डोमेन है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत जल्दी स्टेमिना खत्म हो जाता है। स्टेमिना जीरो हो जाता है, स्टेमिना रिचार्ज जल्दी नहीं होता। Adventure team, assemble. तो हुताऊ यहाँ पे जल्दी जल्दी चार्ज अटैक ना, अगर आपने जल्दी आपका स्टेमिना खत्म हो गया फिर दिक्कत है। Or not. Take cover. Adventure teamwork is dreamwork. I taste blood. Let's light it up. Nice and spicy. Everybody stand back.
Let's light it up. Scramble. ओ Going in. Miss you. Retribution! बच गया. अभी अपन जाने वाला था. The frying pan into the fire. कौन रह गए? दो रह Adventure गए. time. Teamwork is dreamwork. Eat this. Verdict is Let's light it up. अबे डीलू कहाँ जा रहा है? मुझे लगा नीचे गया. अभी अपन के पास रेजिन खत्म. रेजिन ख़त्म यार. अब जो है क्या करना है, ज़रा सुक्रोज को ऑपरेट करें, फिर उसके बाद जो नया इवेंट आया है वो करते हैं. सेम लाइक सुक्रोज का. चलो गो ऑफ मोड एंड रिटर्न टू सिंगल प्लेयर. चलो भाई. सिंस व्हेन आर यू प्लेइंग गेंशिन? गेंशिन आई हैव बीन प्लेइंग फॉर लाइक मतलब पहली बार अकाउंट बनाया था साल भर पहले, और 6 महीने खेला. 6 महीने फिर मैं नहीं खेला क्योंकि मैं कुछ और करने में लग गया था, और पीसी का भी इशू था, लैपटॉप पीसी का भी इशू आ रहा था, तो मैंने नहीं खेला. फिर अभी पीछे 1 या 1.5 महीने से मैं दोबारा खेल रहा हूँ. वरना अब तक तो मैं AR60 हो जाता बड़े आराम से. बड़े आराम से AR60 हो जाता अब तक मैं. क्या करना है? हाँ सुक्रोस मारो सुक्रो. अबिस कहाँ तक हुआ आपका? अरे हाँ यार अबिस ही तो मेरे को करना था आज. वेट इसके बाद अबिस करने चलते हैं. अबिस मेरा बड़ा एम्बैरेसिंग है, तुम देखोगे तुम हंसोगे. अभी दिखाता हूँ. इट्स टू एम्बैरेसिंग. अरे यार क्राफ्ट करना पड़ेगा. कितनी चाहिए? एक और चाहिए. अभी दिखाता हूँ अबिस, वेट करो. स्पाइरल अबिस में चलेंगे अभी, वहाँ देखना मेरा अबिस. तुम AR60 ईजी नहीं है. हाँ तो मैंने कब कहा ईजी नहीं है? ईजी है. पर मैंने कहा कि 6 महीने में तो हो ही जाता है इंसान का जो लगातार खेल रहा है. 6 महीने में तो कर ही लेता ना. फिलॉसफीज ऑफ फ्रीडम ये चाहिए. कितनी? 8. चलो 3 बोनस. ये हुई ना बात. 55 से 60 1 साल लगेगा यार. 1 साल तो मेरी आधी ज़िंदगी के बराबर है. 1 साल. अरे बाप रे. इसके लिए 6 करना पड़ेगा. अच्छा इसको मुझे असेंड भी करना है ना इसको. असेंड करने के लिए जाना पड़ेगा ऊपर तक. चलो असेंड करते हैं पहले. इसको लेवल 80 तक लेके जाते हैं. छः महीने में 55 से 58 भी शायद ना हो पाए. हाँ उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी आपके पास वो आ रही है, क्या कहते हैं, क्वेस्ट कितनी आ रही है. क्योंकि 55 तो मेरा हो गया. समझ रहे हो? 55 तो हो गया. ओह सॉरी. असेंट. हरिकेन सीड और 6 चाहिए. नेक्टर, एनर्जी नेक्टर. चलो ये करेंगे बाद में. अब पहले चलता हूँ स्पाइरल अबिस. स्पाइरल अबिस देखना था ना. अब इससे प्रीमोज मिलते हैं. हाँ मैंने कभी यार पता है क्या, मैं ना इस गेम को खेल रहा था. मैंने जब गेम खेलनी स्टार्ट की थी, बिल्कुल सीधा बताता हूँ, और ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर जो लोग नए आए उन्हें मैं बता दूँ. मैंने गेम खेलनी स्टार्ट की थी, मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी. इस गेम में क्या मैकेनिक है, क्या प्रीमो है, क्या ये क्या वो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था.
मैं यार स्टोरी फॉलो करनी है गेम की। धीरे धीरे पता लगा कि स्टोरी एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है और नई नई अपडेट का इंतज़ार करना पड़ता है। और तब तक क्या करोगे, हाथ में लेके थोड़ी बैठे रहोगे अपना, मतलब अपनी गेम। तो फिर मैं क्या कहते हैं, फिर मैंने ध्यान दिया कि चलो यार कुछ कैरेक्टर्स बिल्ड करते हैं, कुछ समझ रहे हो। अगर यहाँ पे इसने दिखाया कि मैंने पहले कितनी क्लियर करी है तो देख लेना, नहीं तो पहले मैंने सिर्फ 4 फ्लोर क्लियर किए हैं बेस के, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा यार कौन क्लियर करेगा, बाढ़ में जाए। डीपेस्ट डिसेंट फ्लोर 9 चेंबर 3। ओके। When Dendro Core attacks, this includes Burgeon and Hyperbloom attacks. It's an opponent. A Shockwave will unleashed at that opponent's position, dealing a true damage. A Shockwave can be unleashed this way every 2 seconds. Okay. पर Dendro Core का तो मेरे पास है ही नहीं कुछ। तो यार ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें में मैं तीसरे नंबर पे था मैं। एवरी मंथ 600 प्रीमोज मिलते हैं अब इस 36 स्टार करने से। अब देखते हैं कितने स्टार होंगे। ये कितने स्टार हुआ है मेरा? 3 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 3। हाँ तो फ्लोर 8 तक 3 हो चुके हैं। ठीक है, अब है 9वें की बारी, 9th। ठीक है, ये अब इस 8.3 से, अच्छा 8.3 से कभी उसके आगे नहीं किया। अच्छा आपने डेंड्रो आर्कन पुल किया? नहीं रावण, नोप, डेंड्रो आर्कन नहीं पुल किया मैंने यार, क्या कर सकता हूँ। डैमेज डेल्ट बाय एक्सप्लोजन ऑफ डेंड्रो को, अब यहाँ पे डेंड्रो का वो है, यहाँ हो गया ना दिक्कत। कोर्स प्रोड्यूस्ड बाय कैरेक्टर ब्लूम रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 125%। डैमेज डेल्ट बाय बर्जन एंड हाइपर ब्लूम रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय कैरेक्टर इज इंक्रीज बाय 125। यहाँ पे वो लिया हूँ का जो अपना वो है, अरे ट्रैवलर डेंड्रो वाला। शी इज़ ब्रोकन, सब ब्रोकन है यार, हम खुद अंदर से ब्रेक हुए पड़े हैं लेकिन उसके लिए मुझे टीम भी बिल्ड करनी पड़ेगी ना। मुझको मम्मी आर्कॉन चाहिए जिसके लिए सेव करना है अपने को। ओके, पहली टीम में मैं किसको रखूँ? पहली टीम में मैं रखता हूँ इसे और बेनेट, और किसको लूँ? शिंगचो। बिल्ड नहीं है यार, बिल्ड ही नहीं है मेरे पास कैरेक्टर, इसी वजह से मैं अभी ज़्यादा क्लियर किया नहीं मैंने। शिंगचो को ले लेता हूँ, कुछ तो काम आएगा। सेकंड हाफ में डीलूक और डायोना, सुक्रोस, मारो सुक्रो और मारो ट्रेवलरो। ओनली 3 कैरेक्टर लेवल 90। हाँ यार देखो मेरे को शर्म आ रही है, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी को। डोंट शर्मिंदा मी एनी मोर। मैंने नहीं किया बिल्ड यार, नहीं किया, अब कर रहा हूँ ना। तुम लोगों को देखने को मिलेगा कैसे कैरेक्टर बिल्ड होते हैं दोबारा से, तुम तो कर चुके हो सब। फर्स्ट हाफ ठीक है, सेकंड हाफ ठीक है, 2 फिजिकल डैमेज वाले हो गए विद पायरो एंड दिस एंड दिस। पहले टीम में क्राउड कंट्रोल यूज़ करना अच्छा होगा, सेकंड टीम में हाई डीपीएस। ओके, तो क्राउड कंट्रोल के लिए मैं इससे ले जाता हूँ फिर यहाँ पे। तो क्राउड कंट्रोल के लिए पहले में फिर ये ले आते ना अपनी ये अरे सॉरी ये इसको ले आता हूँ, हाइपर ब्लूम वाले को और बेनेट को। सेकंड हाफ में ये डायोना और ट्रैवलर ऊपर क्या ओह सॉरी, यार डोमेन के लिए मैंने पूछा था। अच्छा डोमेन के लिए हेल्प चाहिए, सॉरी। हाँ डोमेन के लिए यार अभी डोमेन क्लियर किया, तुम थोड़ा लेट हो गए। अभी 3 लोग आए थे चैट से डोमेन के अंदर, तो क्लियर किया था। अब इसके लिए काश हेल्प होती कि अब इसमें आके कोई हेल्प करा देता तो मज़ा ही आ जाता। शिंगचो बोला था ना इसमें, हाँ चलो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, इसी में देखते हैं। विश मी लक, या फिर मुझे पिटते हुए देखना डोमेन के अंदर, मार खाते हुए। Character elemental skill damage 20%. When character HP is greater than 50, defense 40%. Defeating an opponent instantly restores 8% HP for the current character. Okay. ये वाला ले लूँ? कौन सा वाला लूँ? बताओ, 1 2 3। ये ले लेना चाहिए। Elemental skill damage.
कैन वी प्ले अबिस इन को ऑप? नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है। खुद क्लियर करो। 600 प्रीमो जेम्स दे रहे हैं भाई, ऐसे तो जनता एक दूसरे की क्लियर करा करा के 600 मारेगी हर महीने। बताओ इन तीनों में से कौन सा लूँ? कैरेक्टर एलिमेंटल स्किल, कैरेक्टर एच पी ग्रेटर डिफेंस, ये तो रहने दो, या फिर ये वाला फर्स्ट या थर्ड में से कौन सा? जल्दी जल्दी। डेनी CR7, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, वेलकम। क्विक पोल चल रहा है, बताओ दोनों में से कौन सा लूँ, फर्स्ट या थर्ड? फर्स्ट, ओके। एलिमेंटल कंफर्म, चलो ओके ओके। सुक्रो से स्टार्ट करते हैं, मारो सुक्रो। अबे सुक्रो बोली थी भाई। Swirl, Mark 2. Time for retribution! अबे ये रह गया। Stand clear. आ जाओ भाई। I'm going in. आओ आओ आओ, कौन है ये? Your verdict is Absorption test. Let's light it up. scatter! आदत नहीं ना अलग अलग टीम की, वरना अपनी जो टीम आप ज़्यादातर यूज़ करो ना उस पर हाथ बैठा होता है, तो अपने को पता है कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। Animo test 6301. अबे ऊपर क्या कर रहा है बे तू? Burn! हो गया क्लियर? अरे Animo hypostasis तो emulation. यहाँ क्या ज़रूरत है? Teamwork is dreamwork. Absorption test. Your verdict is कौन रह गया? ओहो, germinate! ऑन दी अदर साइड। ऐश्वरी येलो, आज हम कोशिश कर रहे हैं एबिस क्लियर करने की, तो आइए जानिए देखिए कि क्या एबिस क्लियर हो सकता है। कौन है? That's close enough. New punching. Ring cutter. अबे Think you can bully me? Diana special. You can't run. Shiver. Where do you think you're? I'll be back. Feeling lucky today? Shaken and stirred. Can't handle me. Yeah. Try to keep up. Need you want this one? You want this one? Feeling lucky today? Lights out. No, my sword. Scratch that. Diana special. You want this one? You want this one? Get back! हो गया 3 स्टार। ये 9th फ्लोर कंप्लीट हो गया।
ओह कौन सा फ्लोर चल रहा है अभी? 9th 9th फ्लोर चेम्बर 2। इसमें जेली और मशरूम भी लड़ रहे हैं, ये अपडेट करते रहते हैं यार। अब बताओ यहाँ पे जल्दी बताओ, एलिमेंटल मास्टरी, मेरे ख्याल से एलिमेंटल मास्टरी सही रहेगा इसमें, क्यों? है ना, एलिमेंटल मास्टरी शुड डू द ट्रिक। ये दोनों तो फिर वही है, मैक्स एचपी का मैं क्या करूँगा यहाँ पे, यही है यार। तुम लोग भी यही बोलोगे, एलिमेंटल मास्टरी है ना? बताओ बताओ बताओ। हम इंतज़ार कर रहे हैं। ईएम ना, हाँ चलो। Guess we can rest a bit. ओके, सुक्रो सही अपने पास, मारो सुक्रो। Animal test 6308. Absorption test. Swirl, Mark 2. I'm going in. Burn! Ha! No! अरे 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 अरे, Stand clear. Verdict is तू कब तक शील्ड के पीछे छुपेगा? मैं क्लेमोर कैरेक्टर हूँ। Absorption test. Teamwork is dreamwork. burn. Animal test 6308. Sa! Yo! Ha! Ha! Enhanced animal module 70. Verdict is इसका शील्ड बहुत अननोइंग है। अरे इसका शील्ड, क्लेमोर कैरेक्टर के लिए क्या शील्ड अननोइंग? Think you can bully me? Witness the power of Gugwa. Huh? You can't run. Can't handle your drink. Huh? एक तो इसे हटाऊं ससुरे को। अरे कौन रह गए? ये दो। Judgment. Shiver. ओ Shaken and stirred. Diana special. You can't run. इसको तो इसी से डील करना पड़ेगा, रोजारिया से। अबे ये कहाँ जा गया? अबे तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी बबल के अंदर, अपनी बबल में। इसके बाद भी कुछ होगा? नहीं हो गया। आपको देख रहा तो मुझे मेरे अबिस के पहले दिन याद आ गए। और मुझे मेरे अबिस का कुछ दिन याद नहीं है। शाओ कैन कैरी होल टीम। अब इसमें से बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एलिमेंटल मास्टरी लूँ या अटैक 40% लूँ? मेरे पास हीलर्स हैं। ईश्वर ये भी मैंने अभी तक नहीं किया। मैंने भी अब तक नहीं किया था, मैं अब कर रहा हूँ। यहाँ बताओ, यहाँ क्या लूँ, 1 या 2?
आपके 4 स्टार कैरेक्टर्स 5 स्टार जैसा काम कर रहे हैं मेरे लिए यार। यहाँ पे बफ भी मिल रहा है ना अबिस के अंदर। अब यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो 40% अटैक है ना, विच इज़ 15% डिफेंस माइनस कोई चलता है, मेरे पास हीलर्स हैं वो मैं हील कर लूँगा। लेकिन समझ 40% अटैक। आपका हाईएस्ट डैमेज क्या गया है? मेरे डी लुक पे एक बार गया था 70,000, जो मुझे याद है 70,000 गया था डी लुक पे। 10-3 तक ही शाव चलेगा। यहाँ बताओ यार, चलो मैं ये ले रहा हूँ सेकंड वाला छड्डो। I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? I'm going in! Stand clear. Time for retribution! बे तू कहाँ भाग रहा है? इधर आ, इधर 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 आ, इधर 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 आ। Let's light it up! Propagate! ये कैसे बच गया छोटा सा? Everybody stand back! Burn! Scatter! Absorption test. Animal hypostasis emulation. Ow! Ha! मेरा हाईएस्ट डैमेज 3K है। अच्छा डैमेज है यार। Ring cutter. Scratch that. Yeah. Punishment. Look at you, Boo Down. Testing my Rain outlines your judgment. नो हाइड्रो कैरेक्टर शिंगचो है, पर मैंने उसको बिल्ड नहीं किया हुआ। शिंगचो है हाइड्रो मेरा, बट नॉट बिल्ड। ओके, यहाँ पे नए टीम तो वही है अपनी। 1 2 3 4 1 2 3 एंड या काया को ले जाऊं? हाँ, किसकी जगह लेके गया था काया को? बेनेट की जगह? नहीं, बेनेट ऊपर है। आपकी सुक्रोस फुली बिल्ट है? नहीं, सुक्रोस मेरी C6 है। उसके मतलब कि टैलेंट जो है अभी ठीक ठाक हैं, अभी 10-10 पे हैं दोनों। बस उसको बिल्ड करना है। उसकी वेपन बिल्ड नहीं है सुक्रोस की, बाकी सब सही है। और उसके आर्टिफैक्ट्स अच्छे नहीं है सुक्रोस के मेरे। उसको एलिमेंटल मास्टरी वाले मैंने आर्टिफैक्ट्स पकड़ाए हुए हैं इधर उधर के। वीवी डालना है, वेरिडिसेंट वेनेरियर डालना है, वो नहीं डाला हुआ मैंने अभी। तो एनीवेज क्या लेकर गया था मैं? शिंगचो। ओके, स्टार्ट। काया बिल्ड है तो लेके जाओ। काया बिल्ड नहीं है यार। नो काया बिल्ड। ओके, Germinate! I'm going in. Enhanced animal modules. Time for retribution! Ha! Ha! Yeah! Propagate! Ha! Animal test 6308. Your verdict is? Ha! Ta! Everybody stand back.
Burn! Ha! Ha! ये जो मुर्गा है ना उड़ने वाला, ये बड़ा परेशान करता है तो थोड़ा। Stand clear. Yeah, absorption test. Animal hypostasis emulation. Yeah! Yeah! Ha! Yeah! Yeah! Ha! Yeah! Oh, okay. Let me read you a verse. Diana special. Shiver. No, my sword. You can't run. Yeah. Can't handle your drink. Shaken and stirred. Yeah. Come on, yes. Scratch that. बहुत टाइम लग रहा है बे। लोग जो कह रहे हैं डायनो की शील्ड अच्छी नहीं है, ये डायनो की शील्ड ने बचा रखा है मुझे यहाँ पे। तुम लोग डायनो को फालतू में ही बदनाम कर रहे हो। I'm here. Think you can bully me? Rain outlines your fate. Diana special. You can't run. Get back! तो कहाँ मार रहा है बंदा? उधर है यार तू भी। रेजर Shiver. Yeah. Shake it and stick. No, my sword. ओह, रोजारी फिजिकल बिल्ड है। हाँ, रोजारी को फिजिकल बिल्ड किया हुआ है। C5 है, एक और मिल गया तो फिर उसको मैं प्योरली फिजिकल बिल्ड ही करूँगा। ये क्या खुशी में घूम रहा है पीछे? इनके लिए गाओ या फिर फ्रीज टीम एंड सही रहता है। फ्रीज ही तो कर रहा हूँ उनको मैं, तभी तो मैंने वो रखा हुआ है। शिंगचो और बाकी 2 फ्रीज वाले हैं, और रेजर अपना फिजिकल डैमेज के लिए, रोजारिया भी फिजिकल डैमेज के लिए। C5 है। शहनी को ये बॉसेस का आर्टिफैक्ट चाहिए सेकंड असेंड के लिए। अच्छा, शहनी में बिल्ड नहीं कर रहा, मेरे पास है भी नहीं। कितने फ्लोर हो गए मेरे? मैं तो गिन भी नहीं रहा। 10th फ्लोर, चेंबर 2। एलिमेंटल स्किल डैमेज 20, व्हेन कैरेक्टर्स HP इज लेस देन डिफेंस 80%, कैरेक्टर हीलिंग इफेक्टिवनेस नहीं। एलिमेंटल स्किल स्टार्ट। That's close enough. What's one wall? Law of the jungle. Teamwork is dream. The verdict is किसको लगेगा? इसको? अरे बाप रे। It's over! ओह नो नो नो, इन चंगू मंगू का टॉप है। Cheap tricks! Animal test 6308. Stand clear. spring forth. ब्लूम। ओहो, Fall before me! Adventure to Burn! Everybody stand back. Animal test 6308. Fall before me! Stand clear. oops, Strike will suffice! oops, Let's light oops। it up.
Enhanced animal module 75. नोप नोप, नहीं तो गया मेरा डीलू, Verdict बच गया। is ओह शिट, आजा भाई। Teamwork is dreamwork. Okay. there can be no excuse Ah. for defeat. तो मेरे पास बचा ही नहीं कोई। Animal test 6308. Scatter! नो, अबे मेरे पास डैमेज के लिए बचा ही नहीं कोई, मेरा मेन डीपीएस तो गया ब्रो। Off we go. Taste my blade. Absorption. Yeah, stand clear. This isn't over. Let's light it up. Oops. I've got the upper hand. नोप, आ गया। This is just my. बताओ क्या मैं सुक्रोज से क्लियर कर सकता हूँ इसको बाकी, या नहीं कर सकता? टेल मी। बताओ सुक्रोज से होगा क्लियर कि नहीं होगा? 7 मिनट के अंदर रिट्राई करो। Stand clear. लगता तो भैया करना तो वही पड़ेगा, पर क्या करूँ, देखते हैं करके, क्या पता हो। Yeah. One strike will suffice. Animal test 6308. गई सुक्रोज भी गई। Swirl Mark 2. Taste my blade. नहीं होगा, मार दे भाई मुझे, मार दे मार दे मार दे, ले मार। Don't break my glasses. I should. डोंट ब्रेक माई ग्लासेस। इसे भी मार दे। ये क्या हो रहा है, इसको लग क्यों नहीं रही? सुक्रोज टू सॉफ्ट फॉर एनी एनिमीज। नहीं यार, सुक्रोज को भी मैंने क्या कहते हैं डीपीएस बिल्ड देखा है, ऐसी बात नहीं है। That's close enough. Stand clear. Burn! Fall before me. मैं पहले एक पे फोकस करूँ। ये देख रहे हो, ये क्या बदतमीजी है बे? Going in. This will do. Fall before me. What the fuck? Cheap tricks. यार यहाँ पे ना पता कौन चाहिए, यहाँ पे डायनोय चाहिए। ये जो बदतमीजी है ना, ये डायनोय ठीक कर सकती है। Will suffice. Absorption test. Stand clear. अरे बस कर बहन, मारना कहीं होता, मार कहीं रही है। नो 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 नो। Where did I go wrong? ये प्रॉब्लम है, या तो मुझे टीम चेंज करनी पड़ेगी, डायोना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे शील्ड चाहिए, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। चेंबर 2 में था ना मैं? हाँ, इसके अंदर था। रीट्राई। आई थिंक पहले वाले में अब ये चलेगा रेजर, क्योंकि रेजर की जो ऑल्ट है, ऑल्ट के अंदर रेजर की क्यू में मल्टीपल एनिमीज को हिट कर सकती है। रोजारिया, क्योंकि रोजारिया फास्ट है। डायोना एंड यहाँ पे काया चल सकता है, क्या कहते हो? यहाँ लेते हैं डीलुक, सुक्रोस, बेनेट और ये। आपका राइडन का क्या हुआ? राइडन अभी बनेगा यार, राइडन तो मेरा 20 पे ही नीचे, इसको भी करना है। जोंगली नहीं है यार मेरे पास, इकलौती आर्कॉन सिर्फ मम्मी जी हैं, ये रही यहाँ पे जो, सिर्फ यही आर्कॉन है मेरे पास, और कोई नहीं है। ये ट्राई करते हैं। एलिमेंटल स्किल, चलो। ये कहाँ से आ गया बे? Look at you, Boozehound. You can't run. मुझे तो लगा क्या रहेगी आएंगे। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है क्या?
ये नहीं पता था मुझे कि ये बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेगा। यहाँ पे इनके लिए यही सही है। क्लेमोर कैरेक्टर टू स्लो। Lights out. Yeah, judgment. कंटिन्यू फ्रॉम स्क्रैच। हाँ यार ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेगा। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शुरुआत से शुरू करने में, पर प्रोग्रेस सेव करनी चाहिए ना इनको, कि जो बंदा ऑलरेडी कर चुके से दोबारा ना करनी पड़े। Punishment. Yeah. Yeah. Judgment. Yeah. और कौन है ये? Oh, so sorry. Scratch that. Can't handle your drink. Yeah. Yeah. Shiver. Yeah. You can't run. हवा में उड़ना बंद कर बे। पप। यार हद ही हो गई है, मतलब कि मजाक चल रहा है कोई। कौन सा रह गया? 2 रह गए। ये भी हवा में जाने वाला था फिर से। अल्ट्रा हेलो आई एम बैक। कहाँ चले गए थे भाई? यहाँ पे मेरी इतनी पिटाई हुई है, तुमने छोड़ दी। Enhanced animal ओह फिर से ये आ गए। absorption test. Teamwork is strength. Your verdict is? दोनों और दूर दूर चले गए भाई। Animal test 6308. मैंने ये टीम सिलेक्ट इसलिए की, Let's light it up. Time for retribution! डीलू की ऑल्ट में मजा तो आता है। अभी 10th फ्लोर पे बहुत पिटाई बाकी है यार। हाँ अभी हुई थी पिटाई, छूट गई। पीछे पीछे पीछे, बहुत आगे बहुत आगे। I'm going in. आओ यहाँ आओ। अरे 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 Absorption अरे। test. Adventure. Swirl Mark 2. Burn! अभी तो नीचे आएगा। Stand clear.
बड़ी मेहनत है भाई, बड़ी मेहनत है, धीरे धीरे से हो जाएगा। किसी का मैसेज मैंने मिस किया क्या? अच्छा आपस में बात कर रहे हो, करो करो करो। आई एम बिल्डिंग माई कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द एलिमेंटल रिएक्शन, वर्किंग ऑन ब्लूम टीम। अभी वही तो, इसलिए तो मैं राइडन की एलिमेंटल रिएक्शन के हिसाब से बना रहा हूँ। सुक्रोस, लीसा, बेनेट और अपना ये क्या कहते हैं, राइडन। अब यहाँ काम आएगा, यहाँ आएंगे वो क्या ही रागी, यहाँ आएंगे ना, हाँ यहीं आएंगे। You can't run. Lights out. This moment will be frozen in... Fall before me. Scratch that. अबे बच गए हाले, कूदते, इनका कूदना समझ नहीं आता। It's over. I'm ready. इनका मुझे कूदना समझ नहीं आता सबसे। Fight. Look at you, Boozy. बाय टाटा, हो गया तुम्हारा काम खत्म। Yeah. Shiver. ओहो, Scratch that. मतलब कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी जा रहा है। Diana special. Judgment. इन्हें हटाऊं पहले ससुरों को, सबसे ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं। Yeah. You can't run. It's over. Punishment. शाबाश। Yeah. यहाँ पे एक शील्ड वाला कैरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। अब ये डायोना नहीं होती ना तो ये क्लियर नहीं होता। I think you can bully me. और इसे तो मैं भी दिखाता हूँ। Look at you, Boozound. Scratch that. हाँ, ये ऐसे हिलते रहेंगे, वही तो। यहाँ कौन है? Absorption test. Animo test 6308. Teamwork is dreamwork. ब्लडी हेल, ये दो। You will pay for that. Time for... दो सबसे ज्यादा एनोइंग कैरेक्टर्स यहाँ आ गए हैं। Couldn't break the लो, curse. Absorption test. ओले, My flame. what? भाई इतना ज्यादा डॉज कर रहा है ये क्या हो रहा है? रीट्राई, इतना ज्यादा डॉज। फर्स्ट टीम में क्राउड कंट्रोल लेना था भाई, इसमें मेरे पास 2 टीम के लायक लोग हैं नहीं। दिक्कत तो सारी यही है। अबे यार फिर से आप उसको क्लियर करो। अबे यार, Lights out. Oh, so sorry. Think you can bully me? Diana special. Judgment. You can't run. Fall before me. Yeah. Shiver. Judgment. Oh, look at you, Boozound. यार I'm ready. Law of the jungle. Judgment. Cheap tricks.
Yeah. ओए कोने में नहीं ससुरा तुम कोने में ले आके मारते हो। Yeah. Sketch. Yeah. Lights out. Don't get frostbite. Freeze. Diana special. Think you can? You can't run. Judgment. Punishment. I'll be back. I'll be back. भाई साहब इतना पसीना तो मुझे पहले कभी नहीं आया। इसको गान्यू मार लेती है, मेरा गान्यू है नहीं ना। फर्स्टली मैं वेंटी और हाइपर ब्लूम लेता हूँ। जब से नायदा मिली है तब से माई लाइफ हैज बिकम सिंपलर। सर 150 प्रीमोज में ही संतुष्ट हो जाओ। नहीं भाई ट्राई तो करेंगे। अभी रुको, ट्राई तो करना ही है। Animal test 6308. I'm going in. ये देख रहे हो डॉज कैसे करते हैं? ये देखो, ये ससुरा डॉज करके जाएगा। पहले इसको हटाओ, सबसे ज़्यादा दिमाग इसमें खराब करना है। अब ये रह गया। Time for retribution. दूर। There can be no excuse or defeat. Let's light it up. Ow. Teamwork is dreamwork. Spring forth. Huh? Huh? Let's light it up. Why do they never miss? Huh? Let's light it up. Enhanced animal module 75. Everybody stand back. Come on, Bennett. Let's light it up. अबे भाई ये तो Scatter. Absorption. Adventure. Teamwork is dreamwork. Yeah. अरे Let's light it up. Yeah. Unexpected outcome. Animal test 6308. Everybody stand back. क्या तो जाएगा फुल ट्राई हार्ड मोड के अंदर। Adventure time. दूर। Off we go. Yeah. Adventure time. तुम चेंज हो जाया करो टाइम से। Animal hypostasis and you. Let's light it up. मेन डीपीएस के बगैर फुल ट्राई हार्ड मोड में था। फुल ट्राई हार्ड मोड के अंदर भाई ये तो करना ही था। यस अब पता लग रहा है कि अच्छे कैरेक्टर्स होना कितना ज़रूरी है। Ow. Where did that come from? मुझे लगा नहीं था पर हाँ ठीक है बेनेट फिर भी थोड़ा बहुत मेरा बिल्ड था। अब चेम्बर 3 कैरेक्टर नॉर्मल एंड चार्ज अटैक डैमेज 20%, कैरेक्टर एलिमेंटल स्किम एंड बर्स्ट कूल डाउन -20, इंस्टेंटली रिस्टोर। नहीं यार पहले वाला ही सही है, नॉर्मल और चार्ज अटैक। देख रहा हूँ यार बस वर्कआउट करके भी इतना पसीने नहीं निकलते। ओके लेट्स डू दिस। यहाँ कौन है?
You are not अरे फटुई फटुई के बच्चे. Shake it and stir. Can't handle your drink. Huh. Yeah. दूर हटो भाई तुम. This moment will be frozen in time. Cool it. Yeah. You can't run. Shiver. Look at you, Boozy. now you're testing my patience. ऐसे उठा ये ससुरा. अरे कूदना बंद कर भाई मेरे. Judgment. Shake it and stir. Pew pew. ये बड़े स्ट्रॉन्ग है यार. Punishment. Lupico. गया. My Lupico. Lupico. My Lupico. Freeze. Can't handle your drink. Huh. Scratch. Yeah. Don't get frostbite. Yeah. Judgment. Shiver. Yeah. You can't. Now you're testing my patience. Shake it and stir. Sayonara smash. Judgment. Gotcha. I'm getting Yeah. What a nuisance. Lights out. अरे Will meet. बेचारी. Yeah. Judgment. Dodge this. You can't run. 7 मिनट में हो ही जाना चाहिए. Judgment. Shiver. Yeah. एयर पे तो अभी आता हूँ मैं. This moment will be frozen in हाँ अब आओ. अब आपकी बारी. Judgment. Cool it. Lights out. नहीं हो पाएगा 7 मिनट में. देखते हैं. Yeah. You can't run. Yeah. Freeze. अरे Punishment. Cool it. Judgment. Oh, so sorry. कोई कह रहा था नहीं हो पाएगा 7 मिनट में. हाँ 3 स्टार नहीं मिले बट स्टिल इट्स ओके. यहाँ तो यार 2 ही बचे हैं. ये कैसे क्लियर होगा? चेम्बर 3 सेकेंड हाफ. क्या करूँ इसका? काया की जगह बारबरा ले जाते. अरे यार मैं जो लेके जाता क्या ही लेके जाता और क्या ही लेकर आता. ट्राई करूँ बेनेट से. 2 स्टार भी नहीं होंगे लगता है. 2 स्टार तो हो गए. भाई आके क्या करोगे शांतनु? अबिस चल रहा है. अबिस के अंदर तो हेल्प हो भी नहीं सकती. चलो बेनेट से ट्राई करते हैं. है कौन यहाँ पे बेनेट पे? अच्छा ये है ना. ये नहीं क्लियर होने वाला भाई. Let's light it up. Off we go. Yeah. That's gonna hurt in the morning. Yeah. Teamwork is dreamwork. Let's light it up.
अरे अरे Her Majesty's see that come. Ow! Let's light it up. Yeah. Let's light it up. Over here. Oh, now you've got me worked up. You really know. Benny's adventure team. टाइम में नहीं होगा, होगा ही I नहीं. have स्टॉर्म failed क्रैकन हेलो you. हेलो नहीं होगा यार. दिस इज माय लिमिट. ये है मेरी इस टाइम अबिस की लिमिट. ठीक है, तो ये है मेरी अबिस की लिमिट 10th फ्लोर के 3rd पार्ट में. अब जब मेरे क्या कहते हैं कैरेक्टर्स थोड़े बिल्ड हो जाएंगे ना, तब मैं इसको आगे ट्राई करूँगा. फिलहाल तो जितना कर सकता है ट्राई कर लिया. क्या कहते हो? एक तो विच इज़ अनोइंग, सारे ही अनोइंग है. इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन सा है? कोई सा भी नहीं है. गेट अ गेन अ टोटल ऑफ 12 स्टार्स इन स्पाइरल अबिस. चलो 12 तो मिले, कुछ तो मिला. 10-3 इज़ माई मैक्स. अब जब मैं क्या कहते हैं राइडन की टीम बन जाएगी ना, तब करूँगा बढ़िया से. सुक्रोस भी थोड़ी सी बिल्ड हो जाती है उसमें, बट ठीक है. अब जो है इवेंट प्रीमोस चाहिए ना, इस इवेंट में चलते हैं. पहले ये यहाँ क्या करना है? नॉक द स्लाइम्स इनटू द वाइन गोल्स बाय ट्रिगरिंग द ओवरलोड रिएक्शन विद यानफे एंड क्लीज अटैक टू स्कोर पॉइंट्स. ड्यूरिंग द चैलेंज ऑल पार्टी मेंबर्स कैन नॉट यूज देयर एलिमेंटल बर्स्ट. ओके, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दो. किसे कह रहे हो? मुझे? हम दोनों आर्टिफैक्ट्स फार्म करेंगे. आज के आर्टिफैक्ट्स फार्म हो गए. मेरे पास वही नहीं बचे, रेजिन ही नहीं बचा. मेरी आईडी नीचे आ रही है लोअर राइट के अंदर. अगर ऐड करना है तो वहाँ से ऐड कर सकते हो. ओके अरे वाह, फुटबॉल खेल रहे हैं का? सुंदर, बहुत सुंदर. Boom boom. और कौन बचा है? Motion to compel. अरे गोलकीपर. Boom boom. ये फन है यार, ये भी मस्त है. चलो क्ली की बारी. हैट्रिक. और कौन रह गया? वाह, Boing boing boom. टा टा टा. भाई यार ये तो गलत जगह पे अटके हुए हैं ये लोग तो. La la la. हाँ यहाँ पे सही है. ये गोलकीपर बड़ा अननोइंग है. यहाँ पे ही सही है. और ये गया एक और अंदर. हमें लीवे का मेसी कहते हैं. स्लाइम्स आर अबाउट टू डिसअपियर. नहीं डिसअपियर नहीं होना. गई अंदर, गई. अरे चलो इसे लेके जाते हैं. Motion to compel. ओके हटो. बाय. चैलेंज कंप्लीट. फुटबॉल का कैंडी क्रश टेंपल रन भी आएगा. टोटोको वेयर आर यू?
यूज रेजर्स अटैक टू ब्रेक द एक्सप्लोसिव रॉक्स टू स्कोर। पर रेजर के अटैक से इतनी ऊपर कैसे मैं ब्रेक करूं भाई? अच्छा कैंडी क्रश, ओ मुझे लगा मजाक कर रहे थे। ये तो वाकई में कैंडी क्रश है। ओ फक भाई, तो वाकई में कैंडी क्रश है। तो मुझे लगा लोग यार कमाल ही हो गया। मतलब मुझे लगा हद ही हो गई। स्टॉर्म क्रैकन, कैन यू रिव्यू माई अकाउंट? हाँ भाई बिल्कुल देखते हैं। ज़रा तनिक बैठो थोड़ी देर, मैं ये ज़रा बड़ा जो फन सा इवेंट है इसे पूरा करूं। चैलेंज कंप्लीट, तो कंप्लीट हो गया तो हटो ना। शील्ड ब्रेकर, यूज काजुआ's elemental skill and elemental burst to break the enemy's shield and directly defeat the enemies. ओके चलो, कौन आ रहा है? कहाँ गए? बस यही था। Into the wind. Clouds high. The birds call. As one with wind and cloud. काजुहा का गेम प्ले बहुत सही लगता है यार मुझे। जिस इकलौते कैरेक्टर का दुख है ना मुझे, जो नहीं मिला। वेंटी फिर भी चलो चलता है, काजुहा नहीं मिला मुझे, उसका सबसे ज्यादा दुख है। सबसे ज्यादा दुख किलेम। ये हो गया नंबर 1। अब कौन सा है? नंबर 2। स्टॉर्म क्रैकन, यार अपना वो तो भेजो आईडी। यूज येलान्स एलिमेंटल स्किल टू मूव क्विकली एंड डॉज जायंट पिन बॉल्स। Pick adventure coins up to score points. During the challenge, all party members will receive a cooldown reduction. Okay. Okay. उसके बाद use Sayu's elemental skill to freeze the water surface and move quickly. Pick adventure coins up to score points during the challenge. अच्छा, ये तो Sonic वाली गेम हो गई, Sonic the Hedgehog वाली। आप कितनी बार 50-50 हारे हो? यार एक बार मुझे याद है, उसका मैंने शायद ट्राई नहीं किया। आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड इन चैट। अरे यार यहाँ पर ना मुझे ना क्या कहते हैं, क्रैकन दोबारा भेजो, लेकिन इस बार ना जस्ट सेंड लाइक व्हाट यू से वर्ड्स के अंदर भेजना, नंबर में वो टाइप करना। पता नहीं क्यों मेरी चैट के अंदर नंबर नहीं आते। मैंने पहले भी रिव्यू करने की कोशिश की है पर पता नहीं नंबर क्यों नहीं आते। लाइव चैट को शिफ्ट करो। कहाँ शिफ्ट करूँ? लाइव चैट को कहाँ शिफ्ट करूँ? 8235195562। ओके, एट टू थ्री फाइव वन नाइन 562। प्रणव सब 70 पे ही है। इसको यहाँ मेन डीपीएस किसको बनाने की सोच रहे हो ये बताओ। चैट के राइट हैंड साइड में नियर द एक्स मार्क। अरे उसे तो चैट बंद हो जाती है मुझे चैट तो देखनी है ना। यूर ऑन टॉप चैट पेज, शिफ्टिंग टू लाइव चैट इज द की। मैं लाइव चैट ही देख रहा हूँ एक्चुअली में। हाँ स्पेस बार देके भेज सकते हो, स्पेस बार देखो। मेरा भी कर दो रिव्यू, भेजो यार रावण।
स्पेस बार देके भेजना नंबर्स के बीच में। हाँ ये किसका था? स्टॉम्प क्रैकन का। तो यार तुम्हें मेन डीपीएस किसको बनाना है यहाँ पे? किसके बारे में सोच रहे हो? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक ही है जिसको तुम्हें बिल्ड करना चाहिए, दो एक्चुअली में, ये और ये। शानलिंग को तुम्हारा 45 77 नहीं, नॉट इनफ। कैच चलेगा। एम्बलम ऑफ सेवर्ड फेट, ओके। हाँ इसको एनर्जी रिचार्ज तो थोड़ा चाहिए। कॉन्सलेशन C0 टैलेंट। देखो शानलिंग को बिल्ड करना है। सर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करा है, रिजेक्ट। यार रिक्वेस्ट आई थी, डैनी मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। ये देखो अभी दिखाता हूँ, जो रिक्वेस्ट आई थी मैंने एक्सेप्ट की थी। हाँ शानलिंग देख रहे थे ना। शानलिंग को क्या कहते हैं, एक तो कहाँ गया टैलेंट, इसको कर दो 10। पायरोनेडो को सबसे पहले यही करना पड़ेगा, ठीक है। और आर्टिफैक्ट्स थोड़े से और अच्छे फार्म करो, क्योंकि ये जो रेशियो है ना ये कुछ खास नहीं है। 45 77 ओके है, मतलब कि अब ओके कह सकते हो। अगर मुझे इसको ग्रेड देना होगा तो B+ ग्रेड दे सकता हूँ। अब इसको A-, A और A+ वाले भी आपको मिल सकते हैं। चलो A- कह सकता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं, ठीक है। एनर्जी रिचार्ज ठीक है, ये भी 200% तक जा सकता है, क्योंकि शानलिंग की जो बर्स्ट की कॉस्ट है बहुत हाई है, ठीक है। तो ये तो करो। और इसके अगर तुम्हें मिलते हैं तो यार इसको ज़रूर अनलॉक करो। जोंगली का देखो, जोंगली इसका आर्टिफैक्ट्स क्या है? आर्टिफैक्ट दिया ही नहीं है अभी जोंगली को। जोंगली को आर्टिफैक्ट दो यार, HP वाले आर्टिफैक्ट दो। शील्ड इसकी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और बाकी इसको बिल्ड करो। देखो फिलहाल अगर किसी दो पे मैं कहूँ, अगर दो पे उंगली रखूँ जिनको तुम्हें बिल्ड करना चाहिए, अभी 3 एक्चुअली जो मुझे नज़र आ रहे हैं, शानलिंग, काजुहा, बेनेट, ठीक है। और इन तीनों की टीम में इसको पुट कर सकते हो, शिंगचो को, समझ गए? तो इन 4 पे ध्यान दो। शानलिंग तुम्हारी मेन DPS, काजुहा स्वर्ल डैमेज करने के लिए, बेनेट तुम्हारा वो बूस्ट करने के लिए, क्या कहते हैं, अटैक बूस्ट करने के लिए और हील करने के लिए। और शिंगचो को कितना है टैलेंट है इसके? कॉन्सलेशन C1 है ना, ठीक है ना। शिंगचो को बिल्ड करो, क्योंकि शानलिंग के साथ बहुत अच्छे से काम करेगा शिंगचो। जोंगली को ब्लैक टेसल बेटर। हाँ जोंगली को ब्लैक टेसल दे सकते हो, बहुत लोगों के पास मैंने देखा है। फेवोनियस लांस ब्लैक टेसल दे सकते हो जोंगली को, ठीक है। तो इन तीनों पे ध्यान दो, शानलिंग, काजुहा, बेनेट और शिंगचो, इन 4 की टीम बना सकते हो। आगे उसने नहीं भेजा, क्या कहते हैं, किसे भेजना था? ड्यूड किंग ने भेजा था, नहीं किस कोई तो पूछ रहा था। काइंड ऑफ बिगनर इन बिल्डिंग कैरेक्टर्स, फर्स्ट लुक एट माई कैरेक्टर एंड देन देयर आर्टिफैक्ट देन सजेस्ट व्हाट शुड आई डू। हाँ तो मैंने बताया ना वैसे ही। ड्यूड किंग ने भेजा है ना। हाँ वेट फ्रेंड्स, ड्यूड किंग 83354578 ड्यूड किंग। हाँ अरे ये कैरेक्टर रिव्यू नहीं है, ये कैरेक्टर शोकेस होने वाला है। देखा, मैंने बोला था। आपने फिशल नहीं देखा? फिशल मैंने यार इसलिए नहीं देखा क्योंकि जो तुम्हारे कैरेक्टर्स वहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से जो 4 मुझे लगे जिनकी टीम तुम्हें बनानी चाहिए वो हैं, ठीक है। फिशल तुम बना सकते हो, 5th कैरेक्टर अगर किसी को बिल्ड करना है तो फिर फिशल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। होता हो देखो भाई की 62 248। मैं कह रहा हूँ ये जो है कैरेक्टर शोकेस होने वाला है, कैरेक्टर रिव्यू नहीं। शाओ 49 157। हाँ ये भी सही है यार। एक मिनट, हुताओ को क्या दिया हुआ है? ब्लैक क्लिफ, ठीक है। क्रिम्सन विच, कॉन्स्टलेशन C0। टैलेंट बढ़ाओ यार। अच्छा ये कर रखा है, एक बार दोबारा देख लेना तब भी ठीक है। मैं देखता हूँ कितने ब्लैक क्लिफ पोल है भाई। 1 2, किसी और को भी दिया हुआ है क्या ब्लैक क्लिफ? इसको भी दिया हुआ है? नहीं इसका ब्लैक टेसल है। ओके आर्टिफैक्ट्स 2 सेट वर्मिलियन। आर्टिफैक्ट फार्म करो यार अच्छे खासे। अच्छा देखने के लिए भेजा था? हाँ तो हम देख तो रहे हैं, देख ही रहे हैं।
हाँ मॉमी मीको 3137 विटसिथ गानियो अरे गानियो दिखाओ यार। हाँ ये थोड़ा कम है, थोड़ा क्या थोड़ा सा कम है, 50 से ऊपर तो लेके जाना पड़ेगा। अच्छा बाद में करना रिव्यू, ठीक है। किसका था, कौन कहता है? क्रैकन, एक मिनट, क्रैकन का कहाँ गया? अरे क्रैकन ब्रो कहाँ गया तुम्हारा? हाँ ये रहा 8235 8 कहाँ गया? 8235199562। हाँ क्या था? फिशल कहाँ गई? फिशल ये रही। ओहो ड्रेस बनाई हुई फिशल को, क्या बात है। I created another universe and 33 founded 142 paradise. okay. For I, Fischl, and the Prinzessin de Favonius Warbo। फिशल तुम्हारी सही है, क्रिट रेट थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है। C2 सही है। यहाँ पे काम करो ना, इन दो के ऊपर काम करो। ये तुम्हारा क्रिट रेट थोड़ा सा इंप्रूव करो। जब क्रिट ही नहीं करेगा और डैमेज करने का क्या फ़ायदा? 33% क्रिट रेट का मतलब पता है ना, मतलब 10 हिट करोगे तो 3 में क्रिट मारेगा। अगर तुमने 10 अटैक किए तो 3 में क्रिट मारेगा। रावण मेरा भी कर दो रिव्यू यार, मुझे अपनी आईडी भेजो स्पेस दे के नंबर्स के बीच में, क्योंकि बिना स्पेस दे लिखोगे तो आएगा नहीं, मुझे शो नहीं कर रहा किसी का भी। समझ लो, क्रिट रेट बढ़ाना ज़रूरी इसलिए 33% का मतलब ये होता है कि अगर तुमने 10 अटैक किए तो 10 में से सिर्फ 3 क्रिट मारेंगे, 7 क्रिट करेगा ही नहीं, तो तुम्हारा चाहे जो मर्जी I क्रिट बैलेंस created हो। another universe and founded paradise. So you have For to- I, Fischl, and the Prinzessin de क्रिट रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जो गॉबलेट होगा उसके उसमें क्या दिया है? गॉबलेट कहाँ गया? गॉबलेट इलेक्ट्रो डैमेज बोनस है ना ये, इसको वो नहीं किया हुआ क्या? बढ़ाया नहीं हुआ, मतलब सिर्फ 24%। 24% थोड़ा कम है, 24% थोड़ा कम है ब्रो। अच्छा अभी 9 लेवल के ऊपर है तो उसको लेके जाओ ऊपर, इसे करो। बाकी मैं कहूँगा उस पे वो जो इलेक्ट्रो डैमेज वाला जो गॉबलेट है उसको इंक्रीज़ करने से बेटर है कि इसी सेट के अंदर ढूंढो एक इलेक्ट्रो डैमेज वाला गॉबलेट, ठीक है, विद क्रिट रेट क्रिट डैमेज, और उसको बिल्ड करो। प्रेफरेबली क्रिट रेट हो तो उसको बिल्ड करो थोड़ी एलिमेंटल मास्टरी के साथ। रावण अब भाई, अरे हाँ सॉरी मैं ऊपर चला गया था चैट में, एक मिनट रुको ज़रा। 843 वाला भेजा है यार, चैट मिस होगी। ज़रा रावण एक बार दोबारा भेज दो। स्टॉम्प क्रैकन एक सजेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल मांगो यार। क्रिट रेट वाली बो दे दूँ फिशल को? क्रिट रेट वाली बो कौन सी है तुम्हारे पास? रावण एक बार दोबारा भेजना यार, एक बार। सॉरी मैं ज़रा स्किप कर गया ऊपर वो। अच्छा रावण ने भेजा नहीं आईडी, ईश्वरी के लिए भेजा है 843 वाला। अच्छा 843824 रावण वेटिंग फॉर रुख देवता अराइवल। रुख देवता कौन है? किसी को पता है रुख देवता कौन है? ये कौन है? बताओ। वेटिंग फॉर रुख देवता अराइवल, नाम सुना सुना सा लग रहा है यार। ग्रेटर लॉर्ड ऑफ सुमेरु, ये कौन है? अरे यार तुम जाओ, तुम लोगों को ना जोक समझ में नहीं आया। मुझे भी पता है वो सुमेरु की ग्रेटर और कौन है, तुम लोगों को जोक समझ नहीं आया। ये आ गया तो मेरी फ्रिकी ले रहे हो सब लोग। हाँ अल्ट्रा को समझ में आया कौन है वो देवता, हमें नहीं पता। आर्टिफैक्ट्स फार्म करोगे क्या साथ में? नाहिदा के लिए करना है मुझे। नाहिदा के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ।
डोमेन के अंदर आर्टिफैक्ट्स फार्म मेरा आज के क्या कहते हैं तो ख़त्म हो चुका है, और नाहिदा के लिए मैं फार्म कर नहीं रहा। क्या मजाक। मैंने अपने क्या कहते हैं चैनल पे एक वो भी पोस्ट किया था ना, पोल पोस्ट किया था, रुख देवता हूँ। रुख देवता का हाल तो वो वाला हो गया, क्या कहते हैं स्पाइडरमैन वाला। आपकी टीम्स दिखाओ। मेरी टीम, ये कैन आई यूज स्लिंग शॉट फॉर क्रिट रेट इंक्रीज बट आई विल लैक इन ई आर फॉर ऑफिशियल देन। नहीं यार देखो, तुम्हें वो रखना है, बैलेंस रखना है, ई आर भी चाहिए उसको, ठीक है। तो क्रिट रेट तुम ट्राई करो, अगर तुम्हें उससे मिल रहा है आर्टिफैक्ट से तो आर्टिफैक्ट फार्म करो फिलहाल तो, ठीक है। हाँ मैं रावण के देख रहा था ना, अभी देखे नहीं, सॉरी। रावण 33 175, फिर वही Osmanthus wine tastes the अगर same DPS as I बनाना है remember. तो इसको बढ़ाओ फिर क्रिट रेट को। But फवोनियस लैंस आर्टिफैक्ट जियो डैमेज बोनस, ठीक है। गॉबलेट ही देखना होता है बेसिकली। C1 क्या बात है, पहली बार C1 जॉन्गली देखा मैंने यहाँ पे, वरना यूजुअली सबके C0 होते हैं। शाओ, हाँ ये सही है। 58 तो होना ही चाहिए, मतलब 50 से ऊपर तो होना ही चाहिए। ब्लैक क्लिफ, ग्लैडिएटर्स फिनाले और शिमिनाओ रेमिनिसेंस, ओके। क्रिट डैमेज विद एनिमो डैमेज बोनस। क्राउन, इसका क्या क्राउन किया है? अच्छा डबल क्राउन, ओके। बहुत भरोसा है अपने जॉन्गली पर। देख वही वाली बात है, अपना क्रिट रेट बढ़ाओ यार, कोई फ़ायदा नहीं है क्रिट डैमेज का। मतलब देखो, अगर तुम्हारा क्रिट रेट 25-30% है, ठीक है, उसका फ़ायदा तब है जब तुम्हारा क्रिट डैमेज 200 से ऊपर हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। कि मतलब कि तुम्हारी 10 में से 3 शॉट ही क्रिट मारे, लेकिन मारे तो ऐसा मारे कि बंदा दोबारा उठे ना, समझ गए। एक तो क्रिट डैमेज भी 100-150% है, और क्रिट रेट कम है तो फ़ायदा नहीं है। थोड़ा क्रिट रेट, और क्रिट रेट कोशिश करो आर्टिफैक्ट से ही बढ़ाओ, ठीक है। क्रायो डैमेज बोनस, क्रिट रेट, अच्छा मतलब 33 में से 17% तो यहीं से है, बाकी कहीं पे नहीं है। अच्छा क्रिट डैमेज, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, इसे कर दो, क्राउन कर दो। गानियों के क्यू को तो आंख बंद के क्राउन कर देना चाहिए अगर यूज़ करनी है तो। जोंगली हस्बेंडो, डैडी ली, डीलूक, हाँ डीलूक दिखाओ अपना। किया है बिल्ड थोड़ा भी? 2749, वही वाली बात है, इट्स द सेम थिंग। या तो क्रिट डैमेज पे जाओ तो ऐसा जाओ कि भैया तुम्हारा 250% क्रिट डैमेज है, भले ही तुम्हारा क्या कहते हैं बड़ी से क्रिट रेट 25% हो, क्रिट डैमेज 250% है, ताकि एक बार क्रिट करेगा, लेकिन करेगा तो ऐसा करेगा कि सीधा इंस्टाग्राम पे रील बना के डालने का मन करेगा उस आइडिया का। आर्टिफैक्ट फार्म करना सबसे अनोइंग है बट वर्थ इट, वो तो है। डीलू को बिल्ड नहीं किया वैसे, अगर गान्यू और शाओ है तो डीलू को बिल्ड करने का पॉइंट नहीं है। वैसे मैं एक बार बता दूं, अगला जो रीजन अनलॉक होने वाला है गेम में वो है फॉन्टेन, और फॉन्टेन के अंदर क्या है? पानी, हाइड्रो रीजन है। जो तुम्हारे पायरो कैरेक्टर्स है ना, बहुत काम करेंगे वहाँ पे, ध्यान रखना। क्रायो और पायरो, क्रायो पायरो की टीम बना लो अगले रीजन के लिए। हाँ ये हुआ ना C4। क्रिट रेट और क्रिट डैमेज के जो पीस होते हैं बहुत रेयर होते हैं, और मिल भी जाते हैं ना, तो जब रोल करते हैं उनको तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो क्रिट रेट या क्रिट डैमेज में जाए। हाइपर ब्लूम भी तो मज़ेदार है, हाँ हाइपर ब्लूम भी मज़ेदार है। इसी वजह से उन्होंने नाहिदा को ऐसे इस तरीके से बना के रिलीज़ किया है कि अगले फाउंटेन के अंदर बहुत काम आएगी। ये सही है यार रावण, जो मैंने इसका बताया बस वो देखो, थोड़ा क्रिट रेट पे ध्यान दो, क्रिट रेट को थोड़ा सा उठाओ हवा में, बाकी सब तो सही है।
चले यार, कुछ हम भी अब अपनी बाकी का अकाउंट रिव्यू थोड़ी देर में। यहाँ जो मेरे इतनी सारी वो पड़ी हुई हैं रिक्वेस्ट, इनको पूरा करते हैं। लॉस्ट इन द सैंड्स, कौन सी क्वेस्ट करें? चलो इसे करते हैं, डिफीट। आपने किया था उसके लिए विश? नहीं यार, मैंने नहीं किया। नहीं, माँ के लिए सेव कर रहे हैं, माँ के लिए। माँ नहीं बोलना चाहिए यार, मॉमी बोलना चाहिए। हाँ यार, राइडन के लिए सेव कर सकते हो। राइडन अभी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है, मजाक नहीं है। I'm here. मैं शोगन के लिए सेव कर रहा हूँ। मेरे पास C0 ऑलरेडी है, अब मुझे उसे आगे बिल्ड करना है। C0 ही है, C1 C2 तक मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। Scratch that. Look at you. Lose it. Burn! Ready! Get back! You! Cheap tricks! Shaken and stirred. Ha! Take this! Ha! Ha! Lights out. बाय। Cut down! What a nuisance. You win this battle. राइडन विद C2 इज ब्रोकन, वो तो है ही। अच्छा एक चीज़ दिखाऊं, एक देखो, एक चीज़ नोटिस करना। राइडन कहाँ है? राइडन कहाँ है? राइडन 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 कॉन्स्टलेशन। ये देखो, वाइल यूजिंग मूसो नो हितोताची, ठीक है, राइडन सीक्रेट अटैक इग्नोर 60% ऑफ ओपोनेंट्स डिफेंस, ठीक है, 60% डिफेंस इग्नोर करती है राइडन C2 पे, ठीक है। अब ये देखो, अगर तुमने इसको लीसा के साथ दे दिया, कहाँ गई लीसा मेरी? ये देखो, लीसा का तुम अगर टैलेंट में जाओगे, ओपोनेंट्स हिट बाय लाइटनिंग रोज हैव देयर डिफेंस डिक्रीज्ड बाय 15% फॉर 10 सेकंड्स। यानी कि लीसा का जो लाइटनिंग रोज है, इसको तुम छोड़ो, इससे जो भी हिट होगा वो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट 15% उसकी डिफेंस वहाँ कम हुई, और राइडन की C2 उसकी 60% और कम कर देगी। तो लीसा अगर राइडन की टीम में है तो 75% डिफेंस डिक्रीज। सोचो, 75 डिफेंस गया। इसलिए लीसा के साथ राइडन को मनाओ। और ऊपर से सुक्रोस क्या करती है? सुक्रोस जिस भी एलिमेंट को स्वर्ल करती है ना, उस एलिमेंट की एलिमेंटल मास्टरी जो है बढ़ा देती है, जो डैमेज है वो बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये टीम कैसे काम करेगी? पहले राइडन आई, राइडन ने अपना E किया, ठीक है, फिर उसके बाद तुम जाओ लीसा, उसके बाद जाओ लीसा का तुम Q प्रेस करो, ठीक है, फिर उसके बाद जाओ सुक्रोस का अपना Q प्रेस किया, फिर उसका बेनेट का Q, और उसका राइडन का Q, ख़त्म। इसलिए 4 लोग बनाने हैं इसको, उस कॉन्स्टलेशन की ज़रूरत है। सीधा 15% कम। सोचो, मेरे पास C1 भी है। लीजा रीजनरेट्स 2 एनर्जी फॉर एवरी ओपोनेंट हिट व्हाइल होल्डिंग वायलेट आर्क। सोचो, एनर्जी भी जनरेट कर रही है लीसा C1 के ऊपर। राइडन भी एनर्जी जनरेट कर रही है, लीजा भी एनर्जी जनरेट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी टीम है। एनीवेज, कौन सा करूं इसमें से? कौन सा? ब्लूमिंग सैंड्स? अरे नहीं, एक मिनट, अभी तो ये चल रहा था ना। आई सी यू लाइक इलेक्ट्रो कैरेक्टर्स। नहीं, आई लाइक द कैरेक्टर्स दैट आई हैव।
बाकी इलेक्ट्रो में अपना है थोड़ा सा, फाउंटेन में आगे काम आएंगे। इवेंट डिटेल्स, अब यहाँ चलते हैं, स्टार्ट। येलान येलान, यार इतना जूम आउट अगर नॉर्मली मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए गेम खेलने में, इतने जूम आउट के ऊपर। Take it easy. अरे 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 अरे, हो गया। यहाँ क्या करना है? ओ ओ ओ ओ, ओ। Take it easy. यहाँ से, अरे नहीं नहीं, अरे यार अरे Take it easy. हम्म 240 come on, challenge complete। हाँ होल्डी, यस। सायू, ये कोऑप में बड़ा मज़ा आता है। ओके, लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये इतना ज़्यादा जूम आउट ये मिलना चाहिए गेम के अंदर। अगला जो फीचर गेम में होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इतना ज़्यादा जूम आउट। अपने को कम से कम 180 डिग्री नज़र आ रहा है। Can't touch me. And away I go. अबे इधर नहीं जाना भाई। I'm out of here. Make my escape. Bye. ओह गॉड, Gotta dash. अबे इधर क्यों जा रही बार बार ये? Can't touch me. Huh? यार हद हो गई, इधर क्यों जा रही है वो? अच्छा अब ठीक है, मैंने छोड़ दिया था, सॉरी। I'm out of here. And away I go. कौन सा रह गया कॉइन? यहाँ रह गए। एक कॉइन, एक कॉइन, एक कॉइन, एक कॉइन, एक कॉइन, एक कॉइन।
गायब। तो 180 करने हैं। अरे Make my escape. I'm out of here. Huh. And away I go. चलो 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 161 में थोड़े से और रह गए, थोड़े से और रह गए। Can't catch me. Complete. Use Nahida and Kaching's normal attacks to trigger, quicken, aggravate or spread reactions in a short period of time to summon thunderbolts that will defeat the enemy. Sayu be lazy AF. Haha. She's my spirit animal. Nahida. Don't blink. Ha. Incoming. Everyone hold hands. Speed of light. Don't blink. Cut to the chase. Sharing my knowledge. Hey. Incoming. Speed of light. Make yourselves at home. Nowhere to hide. Committed to memory. यार ये कितनी औसम है यार। वैसे मज़ा तो आता है नाहिदा को प्ले करने में, झूठ नहीं बोलूँगा, मज़ा तो आता है। लेकिन यार यही तो मिहोयो चाहता है, यही तो होयोवर्स चाहता है कि इस मज़े के चक्कर में, ये मज़ा जो पूरे देश को देना चाहते हैं ये लोग, ये इस मज़े के चक्कर में हम अपनी जेब ढीली कर दें। नाहिदा अपने ऑल्ट में डेंड्रो अप्लाई करती है, ऑल्ट में। हाँ, जैपनीज़ में शीज फन, जैपनीज़ में बहुत सारे हैं। पाइमॉन भी जैपनीज़ में अच्छी लगती है। पाइमॉन भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। जैपनीज़ के अंदर थोड़ी कम अननोइंग है, लेकिन पाइमॉन अब थोड़ी है ना, धीरे धीरे जैसे गेम बढ़ती जा रही है, पाइमॉन थोड़ी सी ना प्यारी सी लगनी शुरू हो गई है। मतलब कि शी इज़ लाइक केयरिंग। आगे चाहे जो मर्जी हो, चाहे धोखा दे चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो शी इज़ ग्रोइंग ऑन मी। ओके, नंबर 3। अरे शाओ वाला आ गया, हैमरिंग ब्लो। अबे 1 मिनट रुको, अभी नहीं कर रहा मैं ये। किसी को करना है मेरे साथ एक कोऑप के अंदर तो आओ। किसी ने अगर कोऑप में करना है तो आओ। डोरी का जापानीज सुना है आपने? नहीं, डोरी का इंग्लिश ही मैंने एक बार सुना है, वो भी जब उसकी क्वेस्ट के अंदर आया था। बेस्ट यूज ऑफ नाहिदा इज फॉर फार्मिंग। हाँ, अरे नाहिदा की फार्म किसी को करना है कोऑप के अंदर ये तो बताओ। कैसे हो भाई? मेरा वर्ल्ड ज्वाइन करो, ज्वाइन माई वर्ल्ड अगेन। डैनी ऑलरेडी ऐड कर चुका है मुझे, मैंने कर लिया ऐड डैनी को। एक टाइम था व्हेन शी वाज द Don't we have a job to do? एक टाइम था व्हेन रोजारिया वाज द मॉमी, बट बेचारी नर्फ हो गई।
2-3 बार, 2 बार नर्फ हो गई. So sad. Okay, wait. Event details, co-op, send invite. अब अकाउंट देखना, अभी देखता हूँ, एक इसके बाद देखता हूँ. स्टे. रोजारिया गिव्स मी ऑल काइंड्स ऑफ heebie-jeebies, बट द गुड वंस, अच्छे वाले heebie-jeebies. क्या हुआ? मुझे भी heebie-jeebie मिलती है, लेकिन अच्छे वाली, गुड काइंड. यूज शाउज प्लंजिंग अटैक. मैंने आखिरी बार शाओ पता नहीं कब यूज़ किया था खेलने के लिए, मुझे याद ही नहीं. आई डोंट थिंक मेरा शाओ का गेम प्ले इतना अच्छा है. ओके. Disappear! Boring! Evil! Worthless! 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 Here! Worthless! Here! Boring! अरे वहाँ वाला रह गया. Here! Worthless! Worthless! मैं गलत जगह मार रहा हूँ क्या? ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? Boring! Here! 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 Worthless! अरे Worthless! Useless! ओहो यार. Useless! आह, Here! Worthless! Useless! Worthless! Here! 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 Useless! Boring! ये क्या सोनिक द हेजहॉग वगैरह खेल रहे हैं? Useless! Useless! Boring! Useless! कंप्लीट. शाओ भी सासुके. क्या कर रहा है? यूज नोएल्स अटैक टू ब्रेक द एक्सप्लोसिव रॉक्स. अरे फिर से वो आ गया, कैंडी क्रश. फिर से कैंडी क्रश. छोड़ मेरे को. Steady as stone.
must leave no stone unturned. Leave it all to me. Someone needs assistance. As a good knight should. I Boom. must leave no stone unsteady as stone. Challenge complete. The one we played with ball and that skateboard type thing. Skateboard वाला तो नहीं, ball वाला तो आया अभी तक. Oh, challenge 3 Fast and Furious. Use Yoimi as normal attacks to hit the enemies in a short period of time to summon shockwaves. Okay. Okay. Yoimiya, Yoimiya, Yoimiya. Yoimi को कौन सी भाई रस्ट पकड़ाई हुई है? रस्ट. Time for a light show. Goldfish up down. Here come the fireworks. Fire hazard. A festive reprise. आ गया. ये रहा. The fuse is lit. Goldfish up down. A festive reprise. आ गया. कंप्लीट. अरे अभी तो मजा आ रहा है यार. कहाँ जा रहे हो? Goldfish up down. Fire hazard. अरे गेम निंटेंडो पे था ना? निंटेंडो पे है गेम ये. खेल सकते हो. स्विच पे खेल सकते हो. The one that we played with ball and skateboard type of thing. हाँ, same energy vibes. अरे एक मिनट. अब कौन सा रह गया? दो और. Sequential trial. Use Beidou's elemental skill to hit the balls for points. Use during the energy challenge. All party members will receive a cooldown. Okay. Okay, let's start. वाह यार ये बड़ा सही है. इतना वाइड ना यार. मिहोयो को ना अब ये इस इवेंट का जब वो मांगेंगे ना. अरे 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 एलिमेंट स्ट्राइक. आठ 800 हिट करना है.
हो गया ऑलमोस्ट हो गया. अरे चैलेंज कंप्लीट. दिवाली वाइब. हाँ दिवाली बन रही है. सुपर फास्ट हैट्रिक. नॉक द स्लाइम्स इनटू द वाइन गोल्स बाय यूजिंग जीन्स एलिमेंटल स्किल. ओके ओके ओके. अरे हाँ ये हुई ना बात. Go as one. और आओ ये. Go as one. Go as one. और रह गई. अच्छा गोलकीपर भी आ गया अब. Go as one. अरे Go as one. Go as one. अरे इतनी दूर नहीं भाई. चैलेंज कंप्लीट. जीन बुलीज एवरी चाइल्ड कैरेक्टर इन गेम. भाई उसका काम है वैसे. वही वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है. एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट फीमेल. बच्चों को तो देखेगी ना. इसके बाद ज़रा मुझे सुसु ब्रेक लेना है. इसके बाद फिर उसके बाद दोबारा करेंगे. अयाका. चलो अयाका. अरे इतना दूर. अरे मैं अकेले करने आ गया क्या? दूसरा बंदा कहाँ गया? वो भी तो था. डैनी कर रहा है. नज़र नहीं आ रहा. अच्छा डैनी कर रहा है. नज़र कैसे आएगा? कि मैं ही नज़र नहीं आ रहा तो वो कहाँ से नज़र आएगा?
ओ गई। अच्छा ऐश्वर्या जा रही, बाय 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 बाय, ऑफिस की तैयारी, चलो मिलते हैं। द कॉइन्स इन द फील्ड्स आर अबाउट टू डिसअपियर। इतनी जल्दी नहीं, 420 रह गए थे खाली। हो गया, चैलेंज कंप्लीट। एग्जिट। अब यार मुझे ज़रा टॉयलेट ब्रेक लेना है। आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक। I do Everything's try to lighten negotiable, the mood except overtime. sometimes. But I'm not the best judge of other people's sense of humor. Good deeds and bad. In the end, all will be placed upon the scales. I am not the best judge of other people's sense of humor. साइनो। सुना है साइनो के जोक बड़े खराब हैं। अनलॉक्स इन 11 हार। अच्छा अभी अनलॉक होगा, चलो आज के पूरे हो गए मतलब। Don't we have a job to do? सॉरी यार, अब क्या कर सकते हैं। दो और बढ़ गया। अच्छा जोक अच्छे लेकिन किसी को समझ नहीं आता, वही प्रॉब्लम है। अरे स्टोरी क्वेस्ट करें क्या? मुझे इसकी स्टोरी क्वेस्ट करनी थी काजुआ की। करते हैं। एसर प्लैमेटम चैप्टर एक्ट 1।
ये करते हैं काजुआ की स्टोरी क्वेस्ट. क्या बोलती है पब्लिक? करूँ अनलॉक? करते हैं यार, चलो. एसर प्लैमेटम चैप्टर एक्ट 1. ये स्टोरी क्वेस्ट. नेविगेट. कहाँ जाना है? अरे पास में तो जाना है. इसमें इतना क्या देखना. चलो. आयुष, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल यार. काजुआ के स्टोरी के एंड में एक 4 स्टार का सोर्ड मिलेगा. अरे यार फिर तो करना पड़ा है. First set foot on Inazuma. फिर तो करना पड़ेगा यार. So many things have happened since then. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. जितने भी क्वेस्ट होते हैं, जो डायलॉग होते हैं बोलने वाले, वो अच्छी लगती हैं सुनने में. कम से कम आता तो है कुछ. So, where should we go today? वेट अ मोमेंट. What's up? काजुहा बॉय. अरे ये कौन आ गया? Someone's coming. Hey, what the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? All right, let's convince him to calm down a little. अरे शर्म नहीं आई तुझे? यार कितना हिलता है. कितना हिल रहा है. Judgment! Huh? So you don't have a vision after all. Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? Yes. He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animo vision. That's none of your business. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Hey! Don't be mean! I'm unsmart lots of the time! Anyway, just to be on the safe side, we should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing each other? Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. चलो. A strange and friendless road. Acer Plematum Chapter Act 1. ठीक है, कहाँ जाना है? 501 मीटर. काजुहा. अबे ये तो कोई और है. ये कौन है? चाओ. Hey! Hello? Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. आयुष ब्रो, फूड फार्मिंग कहाँ से करते हैं? कौन सा फूड चाहिए? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. ओह, सब लोग काजुआ के पीछे पड़े हैं.
नहीं हो सकता है फूड फार्म कौन करता है? अरे यार, किसी को अगर डिशेस बनानी हो तो क्या 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 करेगा? फूड फार्म करना पड़ेगा ना. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuya keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. I've heard bits and pieces. It's something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Thank you! Guess we'll go pay a visit to the Tenryou Commission. Alright then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. क्या लाइट आ रही है इनके ऊपर? कहाँ है भाई? अच्छा यहाँ पे. Let's go. ये रहे दोनों. Oh? It's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Oh, क्या बात Your है? hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. 12 कर लिए? अबिस, शाबाश. मैं देखा मैं 10 से 3 पे अटक गया. 10th floor, 3rd पे अटक गया. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. अच्छा, तो इसके क्लैन के बारे में ये quest. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. अच्छा, कल ही स्टार्ट किया है. फूड की गाइड दो यार कोई आयश को. एक्चुअली क्या फूड देखो, तुम क्या कहते हैं शॉप से ख़रीद सकते हो, ठीक है. बाकी डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा फूड चाहिए. मल्टीपल टाइप के फूड्स हैं, ठीक है. मीट है, फाउल है, उसके बाद रेडिश, कैरेट, टमेटो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो ये तो फार्म नहीं होते, ये बेसिकली यू हैव टू रन अराउंड एंड फाइंड कहाँ पर पड़े. मशरूम्स हो गए, ये सारी चीज़ें. शॉप हर एरिया के अंदर एक शॉप है. मॉन्स्टेट में एक शॉप है, ठीक है. तुम अपना मैप खोलोगे ना, दिखेगी. अभी कौन से एआर लेवल कौन सा है तुम्हारा? We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. Raiden mommy is getting soft. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor.
I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the almighty Shogun and the shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaedahara clan's reputation and occupation restored, the Kaedaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. वैसे असली wanderer तो ये है इनाजुमा का स्कारामुश नहीं है. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. AR-19 अरे यार AR-19 में तो बहुत AR-9 अबे तो बहुत लंबा है. फाउल मिलेगा, ठीक है, बर्ड्स मिलेंगे, उनको मारो, ठीक है, और क्या कहते हैं, जो भी मशरूम्स वगैरह तुम्हें दिखे उनको फार्म करो, स्वीट फ्लावर फार्म करो, मिंट फार्म करो, ठीक है. स्वीट फ्लावर और मिंट हर जगह मिल जाएगा. एम्पल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हर जगह मिल जाएगा. ये 2 चीज़ें, ठीक है. मशरूम हो गए, फाउल हो गया, मीट हो गया, जंगल में बोर्स वगैरह मिलेंगे, उनको मारो. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. भाई मूसो नो हितोताची जिसने ओरोबाशी को आधा काट दिया, और इनाजुमा में मूसोसिन गॉर्ज जो जगह है, देखिए ऐसे करके जो एरिया है उसको काजुहा ने ब्लॉक कर दिया. सोचो. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding 2 elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? No, this puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. काजुआ का फेस कट ट्रैवलर से बहुत मैच होता है. यार ये एनिमे है, यहाँ पर ऐसा ही होता है. एक ना किसी ने रील डाली हुई थी, मैंने देखा था, जिसमें ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स को बस उनके हेयर चेंज कर करके दिखा रहे थे. यामचा का फेस गोकू से मिलता है, गोकू का वेजिटा से मिलता है, वेजिटा का इससे मिलता है, बस हेयर चेंज करते रहो, सारे सेम है. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer.
I will first join the Traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. I'm flying! Welcome to Bonton Sanga Detective Agency. What will you have me solve? Hey there! We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. घर ढूंढ रहे हैं भाई इसका. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Sangha would have snapped them up in an instant. Millions? Of Mora? Whoa! Oh, wait. Even at that price, you probably still shouldn't. काजुआ तो भी पायरेट है. हाँ, अब तो बेडो के साथ हो गया ना. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Good guy, Ryuji. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaidehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. That does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. हाँ यार सही कह रहे हो. दोनों के चेहरे ऑलमोस्ट एकदम सेम है. दोनों की स्माइल सेम है. दोनों की चिन सेम है. अगर ये विग हटा दूं दोनों एक जैसे लगेंगे. जैसे कि ट्रैवलर जो है काजुआ ही कपड़े पहन के खड़ा है. और देख भी दोनों एक ही तरीके से रहे हैं दोनों. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. ट्रैवलर ट्विन. हाँ ये क्या कहते हैं, ये ट्रैवलर का असली ट्विन है. Helix, do you know future banner leaks is either Ayaka or Hutao is coming, Raiden is coming. जहाँ तक मुझे पता है. Next banner के अंदर. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaidehara.
Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. तभी तो ट्रैवलर को उन्होंने Truth be किया. told, हाँ, ये भी है. I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. 3.4 में होता हो. Okay. अब तो अगला 3.3 आने वाला है ना, उसमें राइडन है शायद 3.3 में. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. यार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं क्या चैनल पे? नहीं बढ़ रहे. कितने हो गए हैं? $129. अच्छा चलो यार 9 और हो गए. लाइक भी दबा दो यार, जो जो आ रहा है वीडियो को लाइक कर दो. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma. Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. गो फॉर हुताओ सीवन एंड स्टाफ ऑफ होमा. स्टाफ ऑफ होमा तो है नहीं मेरे पास यार. अब इन दो चीज़ों के लिए नहीं कर सकते. कम से कम कैच जो है राइडन का जो F2P वेपन है उसको तो मैं फिर भी फार्म कर सकता हूँ. हुताओ को सीवन करके मैं स्टाफ ऑफ होमा का वेट करता रहूँ. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma Smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. Ah, if it isn't Kaede Harakazuha. What brings you here today? Huh? You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the 2 clans. After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. काजुआ इनाजुमन से ज़्यादा कनेडियन लगता है. एक तो इसने एक मेपल लीफ लटकी हुई है इसके बगल में. Ah, let me quickly explain. The Raiden Gokaden was the collective term for the 5 most acclaimed bladesmithing arts in Inazuma. The techniques of blade making were personally bequeathed to the Raiden Gokaden by the almighty Shogun, and over time further honed and enhanced by the most talented craftsmen. कैच मैंने ले लिया, बस अभी बस R5 करना बाकी है. मेरा भी सेम मैंने भी ले लिया है. R1 तो हो गया है. Unfortunately, a series of events led to the gradual decline of many clans in the bladesmithing trade. Today, only the Amenoma clan has kept its art alive. So sad. Red and white. It is a great pity indeed. In the old days, we each had our specialties. And just as iron sharpens iron, so too did we learn much from each other. As an example,
the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. The wand chooses the wizard, Mr. Potter. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryo Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? Yes. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse, and neither of them came back. Oh. Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry, you have our word. From the sound of that, Hyman doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes.
It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. ये भी हो सकता है कि वो जो समुराई था वही है, उसका माइंड करप्ट हो गया हो. Possible. Let's go, let's go. यार इनका क्या करना है? रेडिएंट स्पिन क्रिस्टल ये क्या चीज़ है? इनको बड़े टाइम से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे. कुछ तो मैंने कलेक्ट किए भी हैं. ये खड़ी सर पकड़ के. I'm very sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. नहीं पता ना उसका क्या करना है. हाँ वही चीज़ यार, पता नहीं क्या चीज़ है. Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. और देखने में पता कैसी लगती है? वो घेवर नहीं होता जो घेवर हम खाते हैं सावन में वैसा लग रहा है. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh, what happened? He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. कुछ ना कुछ तो उसका चक्कर है, स्पिरिट का या भूत प्रेत का. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. इस गेम में पहली बार मैंने वो डिवोर्स वर्ड सुना है. इससे पहले कभी नहीं सुना मैंने. Nagato is just like a broken Genshin gambler. अच्छा. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. Buyer, अच्छा, उसका भतीजा. Yu. I see. Amin Omayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato.
During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. या तो वो फ्रॉड लग रहा है कि दोनों की लगता है कुछ मनी वो करते हैं और अपनी डेथ उन्होंने फेक की फायर के अंदर, ये भी हो सकता है. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. पर इसमें आग लगाने वाली कौन सी बात है? But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? यही कि अपनी मौत फेक कर रहे हैं. I don't know. He just disappeared after the अच्छा, डेथ नहीं warehouse हुआ, दोनों burned गायब down. हैं. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. काजुहा अपकमिंग बैनर. काजुहा का अपकमिंग बैनर कौन सा है? शायद राइडन के साथ रिलीज होगा, आई थिंक. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, वैन I ये नहीं know पता we यार can मुझे. work things out. ये मुझे नहीं पता कि कब आ रहा है काजुहा का. अगर राइडन के साथ है तो अगला बैनर राइडन का है, जो नेक्स्ट बैनर आने वाला है राइडन का है. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Amenoma Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. काजुहा की सारी स्किप कर दी, राइडन की सारी स्किप कर दी. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest काजुहा assured, की. we'll notify you if we find anything. मैं भी खेल रहा था ना काजुहा के साथ, मैं यही कह रहा था यार, मतलब कि the only person I regret not having is काजुहा. Thank you so much. Character. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paima was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and, अब इस कहाँ तक कर दिया? 10th फ्लोर 3rd पे अटक गया हूँ मैं. 10th फ्लोर 3rd से आगे नहीं हो रहा. मेरे पास जो भी कैरेक्टर्स हैं उनमें. Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. An interesting explanation. I was also considering this possibility. Amenoma Yuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's collectibles. Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, after arguing about it, the two men agreed to hide the truth of this matter. They thought a fire would destroy everything. But then the Tenryo Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secrets. But it's a far-fetched theory. I can't imagine how they would have been able to reach an agreement. हाँ, मर के तीन स्टार हुआ है. 10-2 भी बेनेट के थ्रू, बेनेट से हो गया, क्योंकि मेरे मेन DPS तो जल्दी मर गए. One fact that I keep coming back to is that Amenoma Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker.
Namely, that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. एक टाइम था इस गेम में मेरा पिंग जो है वो 81 83 आता था. पता नहीं काफ़ी टाइम से पिंग जो है 151 156 इस पे अटक गया है और ज़्यादातर 200 से ऊपर चला जाता है. पता नहीं क्यों. Wait. I hear something ominous in the wind. वही होगा. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. मुझे तो 200 के नीचे मिलता ही रेड ही रहता है हमेशा. 399 मोबाइल में ज़्यादा होता है. मोबाइल में ज़्यादा होता है. पीसी में कम मिलता है, मोबाइल में ज़्यादा मिलता है. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. जियो सिम. हाँ एक्चुअली क्या है, पिंग का स्पीड से इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है. पिंग का मोस्टली रिलेशन लोकेशन से है. तो हो सकता है ये भी हो. इंडिया में कोई सर्वर तो है नहीं इनका. जब सर्वर इसका वैलोरेंट का सर्वर मुंबई में आया तब जाके वैलोरेंट पे अब पिंग जो है 15-20 ऐसे आता है. वरना पहले वैलोरेंट पे भी पिंग हमेशा 150 रहता था. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Genshin Impact है, Star Wars. Force की बात हो रही है. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. कहाँ पहुँची स्टोरी? किसी वेयरहाउस में जाने वाले यार हम. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters. But most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. अच्छा, तभी वो जो बंदा ढूंढ रहा था काजुहा को, वो चाहता तो नॉर्मली ढूंढना था, लेकिन वो एकदम से फैनेटिक हो गया. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. What's down
Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. That was too scary! Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out at us! All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. काजुआ का बोलने का तरीका बड़ा सूदिंग है, बहुत प्यार से बात करता है. From this point, the trail appears to split into 2. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here, and seems to be dissipating slowly. Quite possibly. Let's search the area. Whoa! Look at all those hilly churls! They're acting really strangely! Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. You can't run! Shiver! It's... Ugh! Look at this red stuff! What is it? मार मार के खून निकाल दिया. By the looks of it, a letter, written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. I am Nagato. I was wounded by Aminoma Yuya. He took my most precious blade. I chased him but could not catch him. I lay down here to rest on account of my exhaustion. I thought that I might croak right here. My stomach kept on bleeding, but it seems that some strange power has sustained me. Why did he steal that blade? I was going to sell it to him. He even burned my warehouse down. It hurts. It hurts. But for some reason, I can't fall unconscious. So all I can do is distract from the pain is right. What will happen to Saichiko, Yuichi, and Yuji? I'm sorry to them. I really am. Only now do I realize how stuck in my ways I was, and how blind my obsession. I must have been cursed. I collected all those strange and bizarre things, but they won me not one iota of happiness and warmth. Put all of it together, and it still wouldn't have been worth a single word from her mouth. Thank you, and sorry for letting you down, Sachiko. मर गया क्या ये? सर आप कोई टिप्स दे सकते हो आर्टिफैक्ट्स के अच्छे रोल के लिए? भाई हेड स्टैंड करके रोल करो, उल्टे खड़े हो जाओ, ठीक है, हाथ नीचे पैर ऊपर, ठीक है, और फिर रोल करो. यही सबसे अच्छी रोल है, ठीक है. कंप्यूटर के ऊपर वो लटका सकते हो, नींबू मिर्ची, ठीक है. और जितने भी जुगाड़ होते हैं घर में, अगर कोई चप्पल उल्टी पड़ी है उसको सीधा कर दो जाके, ठीक है. जो भी अपशकुन वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है. कोई दिया ना बुझे, दिए जला दो 4, और कोई दिया बुझना नहीं चाहिए, उसका रोल करो, तभी अच्छा आर्टिफैक्ट मिलेगा. According to this letter, a conflict arose because Aminoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. मतलब जोक्स असाइड, आर्टिफैक्ट्स का यही है, दे आर डिज़ाइंड लाइक दैट, कि बहुत मुश्किल से अच्छा आर्टिफैक्ट मिलता है और बहुत मुश्किल से फिर वो रोल होता है, ठीक है. रोल भी नहीं होता. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here
to write this letter when his strength gave out. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. ओह तो मर गया मतलब आर्कन स्पायरल क्लियर करा गया यार 10-3 तक हुआ 10th फ्लोर मतलब 10th फ्लोर 3rd लेवल तक उसके ऊपर नहीं जा रहा वो वहाँ तक लिमिट मेरी वहाँ लिमिट है अब जब एक टीम अच्छे से और बन जाएगी ना तब होगा क्लियर Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. अच्छा नहीं मरा ओके Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. If Ame no Mayuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. यार स्पॉइलर मत दो अल्टीमेटली मैंने इस एंड पे पहुंच ही जाना है इस क्या कहते हैं क्वेस्ट के Right, so let's get moving. I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. मुझे तो कट सीन देखना है फिर से और आपका रिएक्शन अच्छा कोई अच्छा सा कट सीन होगा On इसका with the मतलब search. We must stay vigilant. तुम यार At उस पे any प्रेजेंट point नहीं now, थे we क्या may कहते find हैं ourselves in danger. आर कॉन्क्वेस्ट के लास्ट में तुम प्रेजेंट नहीं थे मैं तो फूट फूट के रोया था अरे अरे ऊपर चलो ये होता है ज़्यादा पिंग से कि कमांड जो बड़ी देर में रजिस्टर होती है नाहिदा के हाँ अरे यार बड़ा बहुत इमोशनल था Here for a long time. हाँ पीछे अभी क्या कहते हैं आर्कन क्वेस्ट की थी मैंने तो अभी वो पीछे चैनल के अंदर है ना मतलब बिल्कुल फूट फूट कर रोया था लेकिन हाँ क्योंकि एक तो मुझे स्कारामूश का बहुत बुरा लगा था क्योंकि स्कारामूश की बैक स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल है ना तो उसके जो इमोशंस निकल कर आए ना वो मुझे काफ़ी हर्ट हुए ठीक है और उसके बाद जो लास्ट एंड था वो काफ़ी Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself. It's no use hiding anymore. वाह पहली बार इसने आवाज़ ऊंची करके बात की है आ गया बार यही तो था वो Kaedehara Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame no Mayuya that stands before us. But what if instead of facing Ame no Mayuya, we are in fact facing the blade in his hand? ये फोर्सर वेपन है शायद जो मिलेगा Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind.
and more recently using the sail as a means to effect. Paimon trying to act tough when around strong characters. 5 स्टार है ये, 5 स्टार वेपन है जो लास्ट मिलेगी. कोई तो कहता 4 स्टार वेपन मिलेगा लास्ट में, 4 स्टार सोर्ड मिलेगी. Or rather, 5 as a स्टार तो means और भी to अच्छा. occupy Amenoma Yuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. हाँ 4 स्टार है, वही तो कह रहा हूँ 4 स्टार है भाई. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. इतनी ही परफेक्ट है तो 5 स्टार होना था ना, 4 स्टार कैसे हो गई इतनी परफेक्ट ब्लेड. So, swords can become conscious and control people? अल्ट्रा, मैं यही बात कहने वाला था अभी कि 5 स्टार वेपन अगर फ्री में मिल गई तो क्या ही होगा फिर. The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. ये तो स्टोरी वैसी लग रही है टार्जन द वंडर कार वाली. अजय देवगन मर जाता है, गाड़ी के अंदर वापस आ जाता है. I seek but one thing, to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. Tarzan. So Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. तो टार्जन वाली वाइब्स आ रही इसमें से तो. When they got tired or injured or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Oh, तो ये चल रहा है. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Bro, वो सिचुएशन ये लगती है. Now, give your body over to me. The wind knows me. Burn! यार ये हमेशा बड़ा पंगा करता है. Scratch that. Look at you. Shall rewrite history. You can't run! Punishment! Into the wind.
Vaporize. Shall rewrite history. Do not stand in my way, or I will strike you down too. Sword के सपने बहुत बड़े हैं. Your bluff's fooling no one. You've lost. हाँ. Lost. I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary, and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! That's line. वही तो sword के सपने बहुत बड़े हैं. बहुत कुछ सोच के इनाजुमा आ गई है. Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art, but from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. लेकिन क्यों? वो तो लास्ट में पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है. क्यों? ऐसा बता तो दिया उसने. क्योंकि उसके मास्टर को जिसने बनाई थी ये sword, उसको वो बाहर भाग गया. अब उसकी मौत का बदला लेना चाहती sword ये. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. वही जैसा टार्जन द वंडर कार की स्टोरी थी. अजय देवगन मर जाता है, फिर गाड़ी के अंदर भूत बन के वापस आता है वेंजेंस के लिए. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. नहीं, किल नहीं किया था. राइडन की वजह से वो छोड़ के चला गया था देश. इसका जो मास्टर था स्नेशनाया चला गया था. वहाँ पे मर गया वो. नॉर्मल डेथ मर गया. ठीक है. तो ये जो सोर्ड है ये राइडन को वो मानती है, क्या कहते हैं, जिम्मेदार. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? What of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. Not Akihiro, you're new here. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the channel. यहाँ पे चल रही है quest. Not Akihiro. Which क्या level है भाई? AR level क्या है? What's your AR level? I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. 56. मुझसे एक ज़्यादा आगे. एक आगे. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life.
Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? You? Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? सही बात है. Silence, you blabbering fool! Blabber तो तुम कर रहे हो I bro. must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. अच्छा डायलॉग लिखे हैं. अच्छे डायलॉग लिखे हैं. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. My AR is 55. 55. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. You completed the recent Archon quest. कैसी लगी? End कैसा लगा Archon quest का? मुझे तो बहुत emotional लगा यार. बहुत emotional. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. I accept. Kazuha? This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... सही बात है यार. Very great sacrifice. मतलब बहुत तगड़ा sacrifice था. Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We क्या have a बात है. chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. डेंड्रो ऑर्कन वाज द सैडेस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा वो भी था, मतलब कि द सेक्रीफाइस दैट शी मेड इज़ वेरी हार्ड. बहुत मुश्किल है ऐसा कुछ करना. I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. I will. Thank you. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. Yes. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute. Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base,
It's been held by Ronin ever since. यक्षा का सेक्रीफाइस, अरे हाँ सेक्रीफाइस किया वो तो बेचारा बुरा फंसा कैज़म के अंदर ना, वो भी स्टोरी बड़ी हार्ट टचिंग थी। इनकी राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है गेंशिन वालों की ओवर द टाइम। Ah, all right. Please lead the way. What about Amanoma Yuya? What should we do with him? भाई को ऊबर करा के घर भेज दो, पापा उसके चाचा जी बड़े परेशान हैं। The blade says he'll let Aminoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful. अरे बहुत दूर जाना है। Yes, that time when Shao was falling and Zhongli saved that time. वो तो बड़ी फील गुड टाइप की चीज़ थी जो जोंगली ने किया, वो बड़ा फील गुड टाइप का था, ठीक है। लेकिन नाहिदा का तो बिल्कुल फील गुड नहीं था, वो तो दिल रुलाने वाली चीज़ थी। कहाँ जाना है? इधर। क्या खंडर में बनाए हुए हैं। गुड इनफ। जोंगली का वो अनएक्सपेक्टेड था, हमें पहले नहीं पता था ना, लेकिन बाद में पता लगा कि शाओ जोंगली से बात करके गया था। सब लोग भूल चुके हैं ग्रेटर लॉर्ड रुक देवता एक्चुअली में क्या है। Into the wind. यार काजुआ पुल करना चाहिए था। Time to get. आओ आगे आओ। One with nature. Clouds high. The birds call. यार काजुआ पुल करना चाहिए था, बड़ा रिग्रेट हो रहा है मुझे खेल के ना। काजुआ मजा आ रहा खेलने में। You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to ये use. पीछे पीछे घूम रहा है। Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. यार अगला जो भी बैनर होगा ना काजुआ का, मन कर रहा है पुल करने का। Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. ओनागी। Let's keep going. कुछ हो पड़ा क्या यहाँ पे? चेस्ट वगैरह नहीं है? अरे बड़े आराम कर रहे हो, क्या चक्कर है? The wind knows me. One with nature. Fallen leaves adorn my night. Into the wind. Shit! मजा आ गया। What's up with the blade? 4 डिसेंडेंट्स है तो 4 लोगों को पता होगा। हाँ वही, क्योंकि ट्रैवलर बाहर से है और जो नाहिदा ने बताया कि उसके अलावा और भी 3 लोग हैं जो बाहर से हैं। एक्सक्विजिट चेस्ट था पीछे। अरे यार I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to अभी जाके wield. देखता हूँ। He cannot hold out much longer. But what would that do? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. He's still trying to achieve his goal.
पीछे जाके चेस्ट देखता हूँ पहले, देख लो कहीं यहाँ थी ना। ये रही। Time to go. Time to go. ये कौवे उड़ रहे हैं अंदर? नहीं, अरे वाह चमगादड़ यहाँ पे भी है। Clouds high. The birds call. डैम यार ये बड़ा सेक्सी है, काजुआ बहुत सही है यार। You were really struggling the entire fight. अच्छा स्ट्रगल कर रहा था मैं, क्या मारा है उसको मैंने? क्या बोल रही है यार ये, इसको समझ में नहीं आ रहा कुछ। Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you... Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. If you choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. I've finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. वही ये ट्रैवलर का उसका वो नहीं है ना, मतलब कनेक्शन नहीं है साथ में। ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि ये सिबलिंग है, लेकिन फिर भी शायद सिबलिंग नहीं है, स्टेप ब्रो। The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed to mean? There they are! Take them down! Murayama! Where do they keep coming from? Yup, we can help this time. Don't worry. I'll use my own blade. Yes. It's just more of the same. Yeah. Yeah, baby! Into the wind. One with nature. That hurts. Hey, One with बहुत हो गया तेरा। You fought way better with your own sword. You are a true Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Perhaps I shall never reach that level of glory. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. What? Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. ये वही वाली बात होगी, ड्रैगन वॉरियर जो था ना उसमें, यार कुंग फू पांडा के अंदर ड्रैगन स्क्रोल,
लूमिन ट्रैवलर की सिबलिंग भी है या नहीं? हाँ, यही तो नहीं पता अभी तक अपने को। यही तो चीज़ अब क्या कहते हैं उसमें आ गई है क्वेश्चन में। This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. अगर ये Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. प्लस अगर ये पता चला कि ये दोनों भाई बहन नहीं है, या स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर टाइप के कुछ है, तो भाई रेडिट देखना थोड़ा भारी हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination you were destined never to reach. The moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. Genshin subreddit full with NSFW post। हाँ वही तो, यही तो मैं कह रहा हूँ, रेडिट देखना भारी पड़ जाएगा। अच्छा सच है कि ट्रैवलर मीटियोराइट की फॉर्म इस वर्ल्ड में आया था? यस, ट्रैवलर उसकी सिबलिंग दोनों। You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? अरे ये तो चल दिया। He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on things. खत्म? ये यही बात करेगा? पहले से बात करते हैं। बस इतना ही कहना इसने। पहली बार डोमेन के अंदर ही हो रहे हैं, वरना बाहर होते थे हमेशा। First time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. हाँ, ट्रैवलर फ्लाई कर सकता है। पहले मैं हवा में तो लड़ रहा था। A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak, and his life near its end. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. The Ishin art had been dealt a devastating blow by the desertion of its best smiths. Blacksmith के पास आएगा कट सीन। He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation back to the land of his birth. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey. But he never wished to rival the gods. All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith, that they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami.
The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors when it was losing its way. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that fleeting moment at the dawn of his journey. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. चलो ब्लेड से बात करते हैं. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition, I also defiled it. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Ame no Mayuya. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix too? Jeez, don't push your luck, mister. हाँ ये भी हो सकता है कि सही कह रहे हो कि हो सकता है वो भी डिसेंडर हो लेकिन कुछ ना कुछ प्लॉट हो हमें कंफ्यूज करने का कि दूसरे देखेंगे कि भाई इसको क्यों नहीं किया हुआ तो कुछ कंफ्यूजन पैदा होगी. It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no Mayuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Thank you all. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. The next in a long line of transgressions. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle and experience a true duel between samurai. अबे 2 बार तो लड़ दिया और कितना लड़ेगा भाई? Oh? And who would be the opponent? I will release Ame no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. अच्छा. You must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. ये भी है कि अगर वो डिसेंडेंट है तो उसकी मेमोरीज रिमंसुल में कैसे है. कुछ तो पंगा है यार. ये कोई फटुई का ही कुछ ना कुछ किया हुआ है. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryu Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Okay, कहाँ हो?
बाहर लड़ेंगे, बाहर। Zoro 22, व्हाट्सअप ब्रो। सब बढ़िया चल रहा है। ऑलमोस्ट स्ट्रीम को कितने घंटे हो गए? 5 घंटे होने वाले स्ट्रीम को। और काजुआ की स्टोरी क्वेस्ट चल रही है। Who knows, maybe first descender or anyone else did this. ये कुछ ना कुछ तक फटुई का किया हुआ है, कुछ ना कुछ नया तरीका मिल गया रिमिंसुल के अंदर मेमोरी डालने का और वहाँ से निकालने का, जस्ट टू मतलब कि थ्रो अस ऑफ। Yep, we still can't let our guard down, even now. Hyman has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin art, Kaedahara Kazuha. Successor of Amenoma art, Amenome Yuya. Yo. Honored to cross blades with you. It is my honor also. लड़ो। Into the wind. The wind knows me. Into the wind. Clouds high. The birds call. Wind strider. अरे गायब हो गया, कहाँ गया? अबे यार। One with nature. Into the wind. Thank you for the experience. वेपन बैनर की पिटी भी वही होती है जो क्या कहते हैं नॉर्मल बैनर की पिटी है। 50-50 होता है और फुल पे वही होता है। Although he appears battered and broken, in your hands it seems he's regained a glimmer of brilliance. बस वेपन बैनर्स के अंदर एक और चीज़ होती है जो वो एक पाथ अपने एपिटमाइज पाथ करना होता है ना, कि जितना विश करोगे आप उस वेपन के जो वेपन आपको चाहिए उसके पास पहुंचते जाओगे। हो सकता है आपको पहले मिल जाए, 50-50 मिल जाए या 100 पुल में मिल जाए। His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness. Nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. Weapons banner scam hai. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end. Okay. Oops. Boom! Oh, it's Yuya! You have returned! I am sorry to have troubled you. It's all thanks to them that I was able to return safely.
A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji from the Bantan Sango Detective Agency tells me that they've found the missing Mr. Nagato. हाँ मैं ये पूछने वाला था कि ये कहाँ गया? Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a happy one after all. By the way, तुमको पता होगा हर आर्कॉन की 2 स्टोरी क्वेस्ट होती हैं. जोंगली की 2 थी, ठीक है, राइडन की 2 थी, नाहिदा की भी 2 आएंगी, लेकिन अब तक वेंटी की दूसरी आर्कॉन क्वेस्ट नहीं आई है जब से वेंटी रिलीज़ हुआ है तब से. तो ये कुछ कहने मतलब कि ये बात चल रही है, हो सकता है कि जैसे कि हर जगह पे पोर्ट होता है ना, यहाँ पे इनाजुमा का पोर्ट रीटो है ना, ल्यूए का हार्बर है, ल्यूए हार्बर है ना, सुमेरू में पोर्ट ऑर्मोस है. इसी तरीके से यहाँ पे मॉन्स्ट्रेट में भी एक पोर्ट है जो रिलीज़ होना है, एक एरिया भी मॉन्स्ट्रेट का रिलीज़ होना बाकी है. तो हो सकता है वेंटी की सेकंड आर्कॉन क्वेस्ट वहाँ पर आए. जैसे ऐसे दिमाग में आया तो मैंने सोचा बता दूँ. I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. But... Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. यहाँ पे कट सीन है या कुछ करना है हमें? अच्छा कट सीन है. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes. The cost is my entire consciousness. अच्छा रीफोर्ज करने के लिए. Oh, so he wants to be reforged. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Nice. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. मेरी पूरी बॉडी में गूज़ बम्स आ गए. Rest in peace. Nice. So, that's why he said it had to be done in that order. ये तो बड़ी फील गुड टाइप की स्टोरी थी, है ना? वेंटी के दूसरे स्टोरी क्वेस्ट के साथ बॉस डोमेन भी आ सकता है शायद. हाँ. मयर जिवारी भी तो आना बाकी है. वो तो है, लेकिन मैं मॉन्स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ. मॉन्स्ट्रेट में भी क्या कहते हैं एक पोर्ट है. अच्छा उसका नाम मेर जिवारी है क्या मॉन्स्ट्रेट के पोर्ट का? His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart. Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really,
really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. पिटी हिस्ट्री 6 मंथ के बाद डिलीट हो जाती है तो बिल्ड पिटी भी रीसेट हो जाती है क्या यार? इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये तो कोई बताएगा। अल्ट्रा को ये पता होगा या डैनी को पता होगा। Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me, just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation, and it's also time to give him a response to the offer he made me. यार तो कुछ ज़्यादा नीचे जा रहा है। अच्छा बाहर ही खड़ा हुआ है। वाह क्या जगह चूज की है इसने। अबे ब्रो You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. The Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanoma Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. डॉनमन पोर्ट है ना? हाँ डॉनमन पोर्ट है। Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaidahara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations, learning more about this blade as I go. I see. I understand. The Kaidahara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the Shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination... Fontaine. Let's see where the wind takes me.
हाँ, a strange and friendless road. Quest complete. That was great. Very nice quest. मज़ा ही आ गया. ब्लेड मिल गई. ब्लेड के बारे में चेक करते हैं ज़रा एक बार. क्या है ब्लेड का राज? किसको दूं ब्लेड? पैलेट को पकड़ूं? एक मिनट. ओके. Base attack or attack percentage. Okay, when a normal charged or plunging attack hits an opponent, it will whip up a hewing gale, dealing an AoE equal to 180% of attack and increasing attack by 15% for 8 seconds. This attack can be triggered every 1 8 seconds. अबे तो काजुआ के लिए बहुत बढ़िया है यार. मतलब ऑब्वियसली उसकी स्टोरी क्वेस्ट से निकली है, क्योंकि नॉर्मल चार्ज और प्लंजिंग अटैक यही 3 तो करने हैं उसने. सही है यार. अब तो और मेरा काजुआ निकालने का मन कर रहा है. उसके लिए एक बढ़िया फोर्स और वेपन मिल गया मुझे काजुआ के लिए. नाइस. हाँ. एनीवेज यार, काफ़ी लंबी स्ट्रीम होगी आज की भी, पर ये मज़ा आया. बहुत सारी चीज़ें की. अब कल मैं ऑनलाइन आऊँगा. कल करेंगे येलान की स्टोरी क्वेस्ट. फिर उसके बाद टाइनारी, साइनो, नीलू, नाहिदा, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे. काजुआ के लिए एक और वेपन आया है 3.3 आएगा 3.3 में 165 EM विद गुड पैसिव फ्री वेपन. लेकिन हाँ वो आएगा अगर इवेंट के, लेकिन उसके लिए विश करना पड़ेगा ना. फ्री में तो मिल रहा है यहाँ पे, है ना. तब करेंगे अगली स्टोरी येलान की कल होगी. अभी के लिए तो यार इतना ही आज के लिए. मैं कुछ खाऊंगा, भूख लग रही है, और उसके बाद मैं अपनी डेली इवनिंग वॉक पे जाऊंगा. ईरान का स्टोरी क्वेस्ट बहुत अच्छा है. बस कल आ जाना. कल करेंगे 11 साढ़े 11 के बीच में ऑनलाइन आऊँगा मैं. कल बैठ के ईरान का स्टोरी क्वेस्ट पूरा करते हैं. R5 मिलेगा इवेंट से, ईरान के उससे. अच्छा इवेंट्स की, अच्छा इवेंट से मिल रही है क्या वो? ओह फिर तो देखी जाएगी. खाली EM से नहीं काम नहीं होता ना. EM चलो अच्छा है, एलिमेंटल मास्टरी मिल रही है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से उसके बाकी के स्टैट्स क्या हैं उस वेपन के, है ना. तो तब की तब देखेंगे. चलो एनीवेज यार, थैंक यू सब लोग जहाँ बैठे है ना मेरे साथ. अब कल दोबारा आना. कल येलान का स्टोरी क्वेस्ट करते हैं. सुनने में आया बहुत अच्छा है. ठीक है चलो यार गाइज, टेक केयर. अब मैं कुछ खा के आता हूँ और थोड़ा घूम के आता हूँ. थोड़ी कमर सीधी करते हैं. टेक केयर. बाय. सी यू टुमारो. बाय 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 बाय.